Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good evening from my side. It is again an absolute pleasure to welcome you to this seminar on orientation to Universal Healthcare Benefit Package based mental healthcare interventions. My name is Dr. Huda Shoaib, Campus Director at Global Institute of Human Development, Shifa Tamir Millat University, and I'm your moderator for today's session. I request all of you to please mute yourself. Thank you. This seminar serves as a platform for us to come together and engage in meaningful discussions, share knowledge, and explore innovative ideas in the field of UHC benefit package-based mental health care interventions. We have gathered here today with a common objective to expand our understanding and create a positive impact in our respective fields. We will now begin our session with the recitation of Holy Quran. हाँ वक्ती तौर पर आ जाता है तो मुझे हाथों में पता नहीं बहुत हो रहा है ये भी या हवा वाली है तो ठंडे हो पता नहीं क्या वजह है मेरे क्लास है अभी ऑनलाइन 2 बजे से 5 बजे Sadaqallahul Azim. Throughout the day, we will have the privilege of hearing from our two esteemed experts. One is Professor Dr. Ali Madi Hashmi, who holds an impressive portfolio of qualifications. Dr. Ali is a diplomat, American Board of Psychiatry and Neurology. He is a chairman professor of psychiatry at King Edward Medical College, Lahore. In front of you is the outline of the seminar, which we shall conduct during this. And first of all, we'll have a brief overview of certificate course on mental health and research for UHC, which includes the introduction to UHC benefit package based mental health care interventions. This will be conducted by Dr. Syed Usman Hamdani. The second one will be the introduction to WHO mhGAP intervention guide for mental, neurological, and substance use disorders, an evidence-informed recommended toolkit in UHC benefit package. Dr. Ali will take the lead in that. And then there will be introduction to common mental health conditions, presentations, and familiarize participants with the common MNS presentations using the evidence-informed master chart. Dr. Syed Usman Hamdani will continue from that as well. Dr. Usman Hamdani is a visionary leader as the founding director of GIHD, who will guide us through the utilization of evidence-informed mental health toolkits for assessing and managing mental, neurological, and substance use disorders in healthcare settings. Our two experts will be sharing their valuable insight experiences that can inspire and shape our thinking towards UHC benefit package. I encourage each and every one of you to actively participate in the seminar. Feel free to share your questions now, and that will be addressed in the end of the seminar. Please contribute to the discussions, and remember, the success to this seminar lies in the collaborative engagement and collaborations. The learning objectives of today's seminar include gaining an understanding of the UHC benefit package and its relevance to mental health care interventions, familiarize GPs with the evidence-informed WHO mhGAP intervention guide, a recommended toolkit in UHC benefit package for the assessment and management of mental, neurological, and substance use disorders in non-specialized health setting, especially focusing on its practical application. It will also help and assist GPs to develop knowledge about common mental, neurological, and substance use conditions and their presentations, assess GPs to develop skills to implement WHO recommended evidence-based psychological interventions to management common mental disorders in primary care settings. WHO Problem Management Plus, which is also known as PM Plus, and also assist GPs to learn how to effectively utilize the evidence-informed master chart to identify and address common mental health presentations in healthcare settings. A brief overview of certificate course on mental health and research for universal health coverage. Once again, I extend my warmest
Welcome to all of you. Let us embark on this journey of discovery, learning, and innovation together. Thank you, and let the seminar begin. I would like to give the floor to Dr. Sayyid Usman Hamdani, please. Thank you, Dr. Huda, and welcome to all participants. Dr. Huda, I saw a couple of participants had said that they can't hear. So I hope that majority of participants can hear. अगर आप लोग सुन सकते हैं तो please maybe chat में बता दें कि you can all hear loud and clear. Those who cannot hear, they can even raise their hands also, so we'll see at the back end. So I hope that the majority of participants can hear us. Yes, that's great. तो बिल्कुल ठीक है. जिनको प्रॉब्लम है प्लीज वो दे गेट इन टच विद द फैकल्टी और मे बी ट्राई एंड ट्रबल शूट ऑन योर कंप्यूटर्स. perfect, थैंक यू, perfect. सो वेरी ब्रीफली अबाउट माई सेल्फ. मैं इस वक्त लंदन में हूँ, वेलकम ट्रस्ट में. यू मे और मे नॉट नो वेलकम ट्रस्ट. सो वेलकम ट्रस्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर एंटिटी है जो मेंटल हेल्थ रिसर्च को फंड करती है. और मैं यहाँ पे रिसर्च लीड हूँ मेंटल हेल्थ ट्रांसलेशन का. और मेरा काम यहाँ पे है, मैं मेंटल हेल्थ की जो रिसर्च की फंडिंग कॉल्स हैं वो डिज़ाइन करता हूँ और हम ग्लोबली प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं. ज़्यादातर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किंग्स कॉलेज लंदन, हार्वर्ड, हॉपकिंस, UCL, सो जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर्स हैं. Normally they are the people who are getting these fundings because research funding is highly prestigious and highly competitive. And I joined this position a year ago. और उससे पहले I was working at Shifa Tamir Millat University at the Global Institute of Human Development, which I founded. और मेरा हमेशा से एक मिशन रहा है यही कि हम मेंटल हेल्थ को किस तरीके से एक्चुअली लोगों तक पहुंचा सकें. तो अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी कि आई एम इन दिस पोजीशन नाउ कि ग्लोबल पोर्टफोलियो भी है बट एट द सेम टाइम GHD इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो आई मेक एवरी एफर्ट सो ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एफर्ट आप लोगों को दे सकूं. और ये जो कोर्स है ये इसी एक का टूल है और आप हमारा पहला कोहॉर्ट हैं. तो आई हैव वेरी हाई होप्स एंड हाई एक्सपेक्टेशंस और आई होप के वी विल डेवलप अ रिलेशनशिप, विल वर्क टुगेदर और हम पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की जो ट्रीटमेंट है उसको रेवोल्यूशनाइज कर सकेंगे. एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल. नेक्स्ट स्लाइड. मैं तकरीबन 10 सालों से ट्रायल्स ही कर रहा था WHO के साथ मिलके, यूनिसेफ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ. और बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और मेरा टीचिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली पब्लिक मेंटल हेल्थ अप्रोचेस की तरफ ज़्यादा है ताकि हम एट स्केल मेंटल हेल्थ सर्विसेज को कैसे अवेलेबल कर सकें. नेक्स्ट. इस कोर्स की जो हमने फैकल्टी पुट टुगेदर की है, नेक्स्ट. So you can see कि there would be very few courses like this जहाँ पे आपके पास तकरीबन 5 इस तरह के पाकिस्तान के एमिनेंट प्रोफेसर्स हों और जिनका करियर हो, ट्रैक हो इन सारी चीज़ों में. और ये जो पहली रो के 5 लोग हैं सारे के सारे प्रोफेसर्स हैं और जो दूसरी रो के सारे लोग हैं ये या तो PhD कर चुके हुए हैं या PhD फेलोज हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. So I think Alhamdulillah we have been able to put together a core faculty, but that is very much groundbreaking or inshallah we'll see that you will benefit from their expertise as we go along. And I kind of invite you to make the best of these faculty members who are available to us. Next. So this is a certificate course on mental health and research for universal health coverage. अच्छा, I will also like to encourage you कि आपके जो भी questions हों तो Q&A वाला जो टैब है, एक टैब है chat का जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें भेज रहे हैं, दूसरा टैब है Q&A का. सो प्लीज़ Q&A के टैब में जो भी आपके क्वेश्चंस अराइज हों प्लीज़ पुट देम इन देयर. हमारे पास एंड ऑफ द सेशन में डेडिकेटेड टाइम है टू एड्रेस ऑल द Q&A. सो प्लीज़ टेक टाइम टू पुट योर क्वेश्चंस इन द Q&A टैब एंड वील एड्रेस देम ऑल. नेक्स्ट. हमारा विजन क्या है? हर चीज़ जो है वो एक विजन से शुरू होती है. हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए इन पाकिस्तान. अब इसमें दो मेन बातें हैं. एक है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. और मैं चैट में देख रहा था कि आप सारे लोग इंटरेस्टेड हैं UHC को जानने और समझने के लिए. तो आई हैव पुट टुगेदर अ डेफिनेशन टू हेल्प यू फेमिलराइज विद इट. But Dr. Zafar Mirza जो हैं, he'll be doing a dedicated seminar on what is universal health coverage and what does it mean for mental health. So you will get a more in-depth understanding in there. इसमें जो की बातें हैं वो ये हैं कि आप लोगों को
तमाम 5 तरह की जो सर्विसेज होती हैं, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पेलिएटिव, प्रोवाइड कर सकें जिनकी उनको ज़रूरत हो और वो अच्छी क्वालिटी की भी हो, और साथ ही साथ ये कि वो उन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप को एक्सपोज ना करें। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के। अब जाहिर है अगर हम पाकिस्तान के करंट सिस्टम में देखते हैं तो जो हमारे पास लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, मिल नहीं पाती, तमाम 5 तरह की नहीं होती, ज़्यादातर फोकस क्यूरेटिव सर्विसेज पे होता है। और जो लोग अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हासिल भी कर पाते हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पॉकेट एक्सपेंस होता है, विच पोजेस देम टू फाइनेंशियल हार्डशिप। और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली जो अफोर्ड नहीं कर पाते, दे आर अनेबल टू गेट दिस quality healthcare services, which is very unfortunate. So this is what we want to change. और ये जो इनविटेशन है आप लोगों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम इस मकसद के लिए, उसका मकसद भी ये है कि देयर इज अ बिग विजन दैट वी वांट टू अचीव कि हम यूएचसी एटलीस्ट फॉर मेंटल हेल्थ, मतलब दैट्स आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, सो लेट अस डू आवर पार्ट एंड इट इज थ्रू यू पीपल that we are going to be able to do this. So that's a kind of a bigger vision. Next. अब मिशन क्या है हमारा? अब हमारे सर्कमस्टांसेस और चैलेंजेस हमें सारों को पता हैं। हाउ डू वी अचीव दिस विजन? तो हमारा मिशन ये है कि हम एक यूनिवर्सिटी लेड मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी बनाएं, जहां पे हम फैमिली डॉक्टर्स और जनरल फिजिशियंस को ट्रेन कर सकें ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली ओरिएंटेड, कम्युनिटी ओरिएंटेड, पर्सन ओरिएंटेड सर्विसेज दे सकें जो कि फैमिली मेडिसिन के पैकेज के अंदर इंटीग्रेटेड हो। So this is all very important. Or again, as you can see, you are the linchpin. Actually, you are the people who are going to make it happen. We are trying to provide you with a platform, resources, and opportunities. And this is your chance to actually make it happen. And we'll go to every length to support you in actually helping us do it. Next. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों ज़रूरी है? ये एक बुनियादी इंसानी हकूक में से एक चीज़ है। एक इंसान का बुनियादी हक है कि उसको एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज मैसर हों, क्वालिटी की हों, और वो उसको फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे से लिंक्ड ना हो। और इस पे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कन्वेंशंस हैं जो हमने साइन ऑफ किए हुए हैं, विच मेक्स इट मैंडेटरी, एक अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे हमारी गवर्नमेंट के लिए कि उसको वो करें। और ये सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे? प्राइमरी हेल्थ केयर पे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सिस्टम्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर फोकस्ड नहीं हैं, वो टर्शरी हेल्थ केयर फोकस्ड हैं। वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, पेलिएटिव, रिहेबिलिटेटिव की तरफ फोकस नहीं है, वो सिर्फ क्यूरेटिव की तरफ फोकस्ड हैं। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट इन विच वी आर ऑपरेटिंग एंड दैट वी रियली वांट टू चेंज दिस। नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राइमरी हेल्थ केयर के बगैर मुमकिन नहीं है, और प्राइमरी हेल्थ केयर फैमिली मेडिसिन, फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल अप टू अस, यू एंड अस, टू एक्चुअली मेक इट हैपन। नेक्स्ट। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैं। दुनिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 73 ईयर्स है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है। दिस फैक्ट अलोन इज एक्चुअली सो हार्ट ब्रेकिंग कि हमारे लोग, ये जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बिगिनिंग ही हमें पता है कि तकरीबन 8 साल कम है उससे जो बच्चा ग्लोबल एवरेज में पैदा हो रहा है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दैट वी फेस। अब अगर आप देखें कि यूएचसी इंडेक्स, अब मैं इंडेक्स में नहीं जाता, हमारे 40% हम उस इंडेक्स के ऊपर स्टैंड करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से, लेकिन वी ऑल नो एज डॉक्टर्स, एज प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, के क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज कितने लोगों को अवेलेबल हैं, कैसे अवेलेबल हैं। अब आप दोबारा देखें कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं वो 80% क्यूरेटिव हैं, और पब्लिक हेल्थ के अंदर जो है वो बहुत कम है। और हमारी हेल्थ पे स्पेंडिंग जो है वो जस्ट 2% ऑफ जीडीपी है प्राइवेट सेक्टर में, और 1% ऑफ जीडीपी है पब्लिक सेक्टर के अंदर। सो वी डोंट हैव रिसोर्सेज। उसका नतीजा ये है कि अल्टीमेटली वी आर लूजिंग एटलीस्ट 8 years ऑफ आवर लाइव्स। इसमें मैं और आप भी शामिल हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे पास हेल्थ वर्कफोर्स ही नहीं है जो कि ट्रेंड हो ये सब कुछ करने के लिए। और ये जो हम कोर्स प्रोग्राम रन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट वन हम्बल एफर्ट इन आवर वे टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट। एंड वी नो कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम ऑपरेट कर रहा है और एक ये कि हम यूनिवर्सिटीज़ हैं
हम किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाएं, हम किस तरह अपनी इस एजेंडा को हेल्थ केयर के कंट्रीब्यूट करें. सो दिस इज वेयर दिस कोर्स कम्स इन एंड वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इन आवर ओन हम्बल कैपेसिटी दैट वी कैन. नेक्स्ट. हमारा हेल्थ विजन भी यही है. 2016 से 2025 का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि हमने तमाम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कि क्वालिटी की हों, अफोर्डेबल हों. नेक्स्ट. और उसके लिए उन्होंने ये इंटरवेंशन पैकेज भी बना दिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, कि इसके ज़रिए उन्होंने बेयर मिनिमम एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस पैकेज बना दिया है, जिसके ज़रिए जिसको इम्प्लीमेंट करके हम सारे लोगों को एक बुनियादी लेवल की एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन मुझे और आपको ये पता है कि हमारे करंट सिनेरियो के अंदर मुल्की हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये काम कर सकेंगी, इट सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो लोग हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनका ये काम है कि वो दे शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे शुड थिंक, लुक एट द रिसोर्सेज, दे शुड लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, they should develop models of service delivery which can actually help us achieve this vision in an innovative way. So this is where you people come in, this is where this course comes in. Next. जब हम ये कहते हैं कि 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, पिलिएटिव सर्विसेज के, और उसमें इंटरवेंशंस के जो लेवल हैं वो ये हैं कि आप कम्युनिटी पे इंटरवेंशंस इंप्लीमेंट करें हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल है उस पे इंप्लीमेंट करें, फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल पे करें, रेफरल हॉस्पिटल के लेवल पे, और पॉपुलेशन बेस्ड ये सारा का सारा काम करें. लेकिन अगर हम अपने इस कोर्स के कंटेंट में इसको देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यू आर द लिंचपिन, आप इसके सेंट्रल चीज हैं. आप एक हेल्थ फैसिलिटी पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट कम्युनिटी लेवल पे है डायरेक्टली, और आपके लिंक्स और लिजॉन्स होने चाहिए हैं विद अ फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल. अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट साइकियाट्रिस्ट होंगे, और अगर हम रेफरल हॉस्पिटल पे बात करें तो ये टीचिंग हॉस्पिटल के साइकियाट्री डिपार्टमेंट्स होंगे. और ओवरऑल ये किस तरह से हमारी पॉपुलेशन हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स को इन्फॉर्म करता है, तो ये एक पूरा इन्वायरमेंट बनता है जिसमें आप ऑपरेट करेंगे, और आपको इस मकसद के लिए नॉलेज चाहिए होगा और स्किल्स चाहिए होंगे, और ये पाथवेज डेवलप करने होंगे. सो दिस इज व्हाट वी शैल ट्राई टू वर्क विद यू ऑन ओवर द नेक्स्ट 8 months इंशाल्लाह, ताकि हम इस तरह का एक मॉडल तरतीब दे सकें जिसके ज़रिए हम मेंटल हेल्थ की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकें. नेक्स्ट. अब इस सारे मकसद के लिए ये किसी एक इदारे का, एक डिपार्टमेंट का, एक यूनिवर्सिटी का, एक फैकल्टी मेंबर का काम नहीं हो सकता. सो देयर इज़ अ बिग टीम दैट्स वर्किंग विद अस, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज और WHO ऑफिसेज मौजूद हैं. सो वी हैव साइंड MOUs विद बोथ ऑफ देम टू हेल्प अस एनेबल दिस विजन. ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एक चैरिटी है, कराची बेस्ड हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग अस विद दिस प्रोग्राम. एंड देन वी हैव आवर फैकल्टी एट GIHT at STMU, Department of Family Medicine at STMU, the Faculty of Medicine at STMU, and then we have the Central Institute of Family Medicine, जिसका आप सारे हिस्सा हैं बड़ी फैमिली के तौर पे. So there are a number of organizations and partners who are trying to implement this program. Sorry, Dr. Huda, हमने participants को mute नहीं किया हुआ क्या? सर कर दिया हमने, किया हुआ था पहले भी. जी. Next slide, please. अब आप इसको ओवरऑल देखें तो आप सबसे बड़ा कॉग व्हील हैं. जिस तरह उसे उर्दू में गरारियां कहते हैं ना, जैसे इंजन के अंदर जो इंजन चलता है, गाड़ी चलती है, तो ये इस तरह की गरारियां होती हैं उसके अंदर. तो आप इसमें सबसे बड़ा कॉग व्हील हैं. ये जो कोर्स है ये एक टूल है जिससे आपको नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क्स, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज मिलेंगे, और उसके ज़रिए हमने एक्चुअली वो एविडेंस बेस्ड सर्विसेज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है. और एंड यूज़र जो है हमारा, लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, उनकी ज़िंदगियों को तब्दीली करना, दैट्स आवर मेन अल्टीमेट गोल. सो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है सबसे बड़ी वो आप लोग हैं, एंड वी आर डिपेंडिंग अपॉन यू टू मेक इट हैपन. एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज दिस. डोंट टेक इट एज अ कोर्स फॉर द सेक ऑफ इट. आपको पता है कि हमने बहुत एफर्ट के बाद आप सारे लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज किए इसके लिए. उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है, मतलब आप लोग भी सोचते होंगे ना कि इफ़ वी आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सो हाउ, व्हाट इज आवर मोटिवेशन टू डू इट रियली.
So the motivation is only that we are actually able to do something which is meaningful to the people who are suffering with mental health problems. And this is your obligation to the people, to the community, to your nation, to be able to to play your part in actually help them live better lives. हम अपना part play कर रहे हैं in the form of these opportunities and resources that we are providing, and we are depending upon you to play your part. And I hope you all realize this, and you're not taking it just for the sake of कि एक university certificate हमें और मिल जाएगा. Because certificates तो आप पूरी जिंदगी इकट्ठे करते रहेंगे. मेन मकसद है लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना, people who are most vulnerable, people who are suffering from mental health problems. Next. So a brief overview ताकि आप लोगों को भी, because you are our first cohort, so आपको एक अंदाजा हो सके कि who else is included in this cohort और लोग कहाँ से हैं. Next. So we tried to do it in a nationwide manner, और हमने इसको उस तरह से बहुत ब्यूरोक्रेटिक नहीं बनाया कि अटेंडेंस होगी, हाजिरी होगी और आप लोगों को ये सब कुछ करना है. वी हैव मेड इट वेरी फ्लेक्सिबल टू सूट योर नीड्स एंड रूटीन्स. और आप अगर ये देख सकें, सो वी हैव अ टोटल ऑफ 162 पार्टिसिपेंट्स इन दिस मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स, ऑफ विच 107 आर फ्रॉम पंजाब, 36 आर फ्रॉम सिंध, 16 फ्रॉम KPK, 1 each from Balochistan, AJK and Dubai. So this is the distribution of the program, which makes me very happy, because this is the first time that we are launching this program, and we have been able to attract these many people from around the country, which means that we should be able to reach out to so many people with mental health problem in these areas, and we are depending upon you to actually make this happen. Next. So ये सारे के सारे cities हैं, and you can see that we have a wide variety of cities and participants from across the country, again which is a ray of hope for us कि अगर हमारे पास थर पार्कर में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के साथ लोग हैं, ये थर पार्कर से डॉक्टर साहब जो भी हैं, क्या ये आज हैं हमारे साथ कॉल पे? क्या ये अपना हाथ हैंड रेज करेंगे? इसी तरह कसूर से हैं, इसी तरह और बहुत सारी जगहों से हैं, बुरेवाला, सियालकोट, मतलब you can see there so people who are attending this program. जबरदस्त. Dr. Aisha, is that Aisha? Asiya. Yes sir, So Dr. Asiya from Gasul. जबरदस्त. So ये मेरे लिए रे ऑफ होप्स हैं कि, और डॉक्टर मनीता राय, that's great, very welcome, and you are our assets, real assets. हम मतलब मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और मोटिवेशन की बात है कि हम अगर थर पार्कर में और कसूर में और साहिवाल में और स्वात में और ओकाड़ा में और बहावलपुर में और बुरेवाला में और गुजरात में, मतलब इस तरह की जगहों पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, पेशेंट्स के लिए एक्चुअली मेंटल हेल्थ की सर्विसेज को एविडेंस बेस करके अवेलेबल कर सकें. एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट मीन कि इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद जैसे शहरों में लोगों को मेंटल हेल्थ की सर्विसेज मैसर हैं. सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट वी नो दैट देयर आर सो मेनी स्टिग्मा इश्यूज, बैरियर इश्यूज, ताकि लोग असेस ही नहीं कर पाते बड़े अस्पतालों में या बड़े शहरों में सर्विसेज को. सो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट कि जो है आप सारे लोग ये अपना रोल प्ले करें. वेल नोटेड डॉक्टर तला, बिल्कुल. लैया वेरी इंपॉर्टेंट, शोर कोट वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर मुजम्मिल, थैंक यू. सो नेक्स्ट स्लाइड. और ये देखें, और बहुत सारे कड़क, कोटली, मीरपुर खास, हरीपुर, टोबा टेक सिंह, चित्राल, लैया, आवरान, जैकबाबाद, टोबा टेक सिंह, नाजिमाबाद, जेलम, all of these areas are really important, and we know mental health के हवाले से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है और कितनी ज़्यादा इग्नोरेंस है और कितने सारे बैरियर्स हैं. So really depending upon all you people to make the difference. Reach out to us. जो भी हमारे बस में होगा in terms of resources, opportunities, networks, links, we will make them available to you to help you make the difference. Next. So this is the course, this is our tool, this is our platform of working together to make the real difference. Next. And I'm really pleased that out of 162 participants, 139 have joined us today. So this is also good. I hope that the rest of the participants also join next time. हम इसमें से करेंगे क्या, हम आपको सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि आपकी नॉलेज बिल्ड हो, आपकी स्किल्स बिल्ड हो, ताकि आप मेंटल हेल्थ कंडीशंस को अपनी रूटीन प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकें, आप उन्हें डिटेक्ट कर सकें, आप उन्हें असेस कर सकें, आप उन्हें मैनेज कर सकें.
आप साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकें in your own settings. Or I'm very pleased and humbled actually, because the work that I was doing when I was in Pakistan, that was actually working with the WHO to make such programs and psychotherapies available, which can be implemented by yourselves, people like yourselves. And I'll be talking about it in the later part of the presentation. Or we will work with you to make sure कि हम ना इसको conventional model में ना treat करें, बल्कि हम improve करें और monitor करें progress of the patients पे. आपका एक तो कामयाबी होगी जो आप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का अचीव करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी अहम कामयाबी होगी वो ये होगी जब आपके पेशेंट्स जो हैं वो अच्छा महसूस करें, उनकी हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का हल निकालें. दैट विल बी द रियल बिग थिंग दैट वी विल अचीव इंशाल्लाह. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हम इसको करेंगे कैसे, कोर्स के कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं. सो ऑनलाइन मॉड्यूल्स ऑन मेंटल हेल्थ हैं, मैं उस पर भी नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा. और फिर हमारे सेमिनार्स हैं, जैसे आज पहला सेमिनार है, दिस इज जस्ट अ ओरिएंटेशन सेमिनार टू टेक यू ऑन बोर्ड. उसके बाद जो दूसरी अहम स्किल्स हैं वो रिसर्च स्किल्स हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि रिसर्च जो है वो FCPS की डेजर्टेशन के लिए ही सिर्फ चाहिए होती है. एंड यू विल रियलाइज के हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इफ यू वांट टू रियली मेक डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल दैट यू केयर फॉर, योर पेशेंट्स. क्लिनिकल रोटेशंस टू हेल्प यू इक्विप विद द क्लिनिकल स्किल्स, जिन लोगों को अभी एलिजिबल नहीं हैं फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ रोटेशंस, वी आल्सो वांट यू टू रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू गेट क्लिनिकल रोटेशंस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें और आपको स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प कर सकें. एंड फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिसर्च प्रैक्टिकम है. एंड दिस रिसर्च प्रैक्टिकम इज नॉट लाइक अ कन्वेंशनल रिसर्च प्रैक्टिकम जहाँ पे आपको एक असाइनमेंट जमा कराएंगे. एक्चुअली वी विल वर्क विद यू टू मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर जो पेशेंट्स हैं वही आपके रिसर्च प्रैक्टिकम का हिस्सा होंगे. और हम ये मेक श्योर करेंगे कि किस तरह आपको हम हेल्प करें कि आप एक मीनिंगफुल चेंज उन पेशेंट्स की जिंदगियों में लेके आए यूजिंग एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस एंड बैकिंग देम अप विद द डेटा एंड द एविडेंस. सो दीज आर द 4 की थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद यू ऑन. अगर आपके इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं, कोई थॉट्स हैं, मैं थोड़ी सी देर में इन सारों पे बात भी करूंगा, but please use the Q&A tab to put in your questions that you may have. Next. So ये हमारा गैंट चार्ट है, टाइमलाइंस हैं. वी आर इन द मई हमारा ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट. आपको 15 मई से मेरा ख्याल है SS मिल गई थी मेंटल हेल्थ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की. सो आई विल कम टू दैट कि आप में से कितने लोग अभी उस प्रोग्रेस में कहाँ पर मौजूद हैं. आपके पास उसमें MCQs और SAQs हैं जिनका आपने जवाब देना है. सो दैट इज़ द अदर पार्ट. जब आप वो सब कुछ कर रहे हैं तो आपके पास LMS चैट जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी चैट का फंक्शन मौजूद है. आप उसको प्लीज़ यूज़ करें ताकि आप हमें बता सकें, हमसे इंटरेक्ट कर सकें, अपनी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकें. आपके पास असाइनमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करनी है. इसी के साथ साथ ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम ये सेमिनार्स कर रहे होंगे. 6 से 8 सेमिनार्स हैं जो हमने प्लान किए हैं. तो जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं जो डॉक्टर नासिर शाह साहब ने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, हम चाहते हैं कि ये सेमिनार्स उनके साथ लिंक अप हों और आप अपनी लर्निंग्स को ला सकें और इन अपनी लर्निंग्स को कंसोलिडेट कर सकें विद द फैकल्टी इन दीज सेमिनार्स. आज डॉक्टर अली मदी हाशमी जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर हैं और किंग एडवर्ड के प्रोफेसर हैं साइकाइट्री के, ही विल जॉइन अस एट 3 PM और he will be delivering the first orientation seminar, and then Professor Fareed Minhas will be joining us, Professor Asad Tamizuddin Nizami will be joining us, and Dr. Siham Sikandar will be joining us, and we will be working with you, and then we have faculty with us, other faculty as well, जो कि आपके साथ काम कर रही होगी इन सेमिनार्स में. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अहम जानें, इनको टाइम पे पूरा करें ताकि हम इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें और अपने पेशेंट्स की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकें. इसी के साथ मैंने जैसे कहा था कि जो रिसर्च की स्किल्स हैं वो आपकी इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं. सो विल बी होल्डिंग दोज वर्कशॉप और उसमें भी आई विल वॉक यू थ्रू द स्लाइड्स थोड़े लेटर पार्ट के अंदर. द प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू इज़ नॉट अ कन्वेंशनल प्रोग्राम. ये वो ट्रेनिंग है जो बैक इन 2013 मैंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से की थी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप लोगों को ऑन द ग्राउंड इक्विप करते हैं रिसर्च स्किल्स से, जिससे वो लोगों की ज़िंदगी में मीनिंगफुल तब्दीली ला सकें अपने प्रोग्राम्स को टेलर करके उनकी नीड्स के अराउंड. Clinical rotations, as I said, reach out to us.
जो जो आप लोगों ने रोटेशंस करनी है, ताकि हम आपकी रोटेशंस को इन टाइम मेक श्योर कर सकें और आपको हेल्प कर सकें। इन क्लिनिकल रोटेशंस में वी वांट यू टू लॉग द केसेस, विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन लेटर पार्ट। और फिर रिसर्च प्रैक्टिकम है वो जो लेटर 6 हाफ के लिए है, 6 मंथ्स के लिए है, जिसमें आप लोग एक्चुअली पेशेंट्स को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जरिए एनरोल कर रहे होंगे, मेंटल हेल्थ के हवाले से अपनी फैकल्टी से डिस्कस कर रहे होंगे, उनके ट्रीटमेंट प्लान्स बना रहे होंगे और फिर उनके अंदर चेंज को डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे यूजिंग वेरी एविडेंस बेस्ड एंड डाटा ड्रिवन अप्रोचेस, एंड विल बी वॉकिंग यू थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द अपकमिंग सेमिनार्स। और उसके बाद आपका एग्जैक्ट एग्जाम है जो कि प्लान है फॉर February 2024 इंशाल्लाह। Completing the online sessions is mandatory. Attending these seminars is mandatory. ये जो चारों components यहाँ पे आपके पास given है, ये mandatory हैं. We are providing you with a scholarship. We wanted कि financial barrier नहीं होना चाहिए. मतलब ये एक बड़ी dichotomy होती ना कि मैं ये कहता कि मैं ये तो कहता हूँ कि किसी patient को mental health के ये barrier नहीं होना चाहिए कि वो irrespective of their ability to pay mental health की सर्विस सीख कर सके, लेकिन किसी डॉक्टर के लिए ये बैरियर हो कि वो अपने कोर्स की फ़ी की वजह से नहीं एनरोल हो पा रहा, सो दैट कुड हैव बीन अ वेरी hypocritical statement on my part. So we have tried our best to make sure कि every one of you gets a scholarship, but we hope कि ये एक अमानत है हमारी आपके पास, ये आपके पेशेंट्स की अमानत है आपके पास, एंड वी वांट यू टू मेक श्योर कि आप इसको पूरी दयानतदारी से इम्प्लीमेंट करें, इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको आगे लेके चलें। वी आर वेरी माइंडफुल कि आप सारों के इंडिविजुअल लाइफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। वी आर वेरी अकोमोडेटिव एंड फ्लेक्सिबल अबाउट इट, बट यू नीड टू कम एंड टॉक टू अस। प्लीज़ ये ना किएगा कि लास्ट मिनट पे फिर हमें बताएं कि मैं ये नहीं कर सका था इस वजह से, और इस वजह से मुझे एग्जाम्शन दे दें और ये सब कुछ कर दें। मैं अमानतदार हूँ उस तमाम रिसोर्स का जो मैं आप लोगों पे स्पेंड कर रहा हूँ, और आई विल मेक श्योर कि मैं उसको पूरी दयानतदारी से इम्प्लीमेंट करूँ। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट, मैं अभी तो आप लोगों की सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर पाऊंगा, बट एट अ लेटर स्टेज बहुत कम मार्जिन होगा मेरे पास किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने का। सो दिस इज़ आवर टाइम टू मेक इट हैपन। वी नीड टू मेक इट हैपन एंड देयर इज़ नो रीज़न व्हाई इट शुडंट हैपन। नेक्स्ट प्लीज़। सो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के मॉड्यूल्स हैं जिनकी आपको एक्सेस है। मैं कुछ देख रहा था चैट में कमेंट्स, शायद किसी के पास एक्सेस नहीं है। प्लीज रीच आउट टू द फैकल्टी प्लीज रीच आउट टू देम, मेक श्योर दैट एवरीवन हैज द एक्सेस टू द ऑनलाइन मॉड्यूल्स, एंड देन वी विल हैव दीज सेमिनार्स, और जो आप अटेंड करेंगे एंड विल बी टॉकिंग यू थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट एंड देयर मैनेजमेंट। सो 15 मई से आपको उनकी एक्सेस अवेलेबल है और वो 15 जून तक एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप उनको कंप्लीट करेंगे। सो वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। नेक्स्ट। और उनका मकसद क्या है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर, जो कि आप कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं जनरल प्रैक्टिस में। डॉक्टर नासिर शाह साहब ने बहुत अपनी मेहनत, तजर्बे और नॉलेज की बुनियाद पे उनको इकट्ठा किया है, तमाम प्रायोरिटी कंडीशंस को उनमें कवर किया है। इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। प्लीज़ मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे लेक्चर्स को ज़रूर सुने। नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है कि आउट ऑफ 162 या 63 लोग जिन्होंने एनरोल किया है, 121 ने तो अपने आप को एक्सेस कर लिया है इस मॉड्यूल में, लेकिन जो 26% लोग हैं, तकरीबन 42 लोग, उन्होंने अभी तक इसको एनरोल भी नहीं किया और आधा टाइम गुजर चुका हुआ है। प्लीज़ इस बात को, इस रिसोर्स को एक अमानत के तौर पे ट्रीट करें, एंड आई नो कि यू आर ऑल वेरी अपराइट ऑनेस्ट पीपल। आई होप कि आप में से कोई भी इसको सिर्फ एज अ मुफ्त की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जो लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया एंड एसेस नहीं किया इन मॉड्यूल्स को, प्लीज़ एक्सेस देम। एंड फॉर दोज हु हैव एक्सेस द मॉड्यूल, यू कैन सी कि सिर्फ 10% लोगों ने MCQ सबमिट किए हैं, 6 से 7% लोगों ने, और इसी तरह SAQs भी बहुत कम लोगों ने सबमिट किए हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे का सारा काम साथ साथ कर रहे हों। वी विल बी रिव्यूइंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। हम देख रहे होंगे क्लोजली कि किस तरह से आप लोगों की प्रोग्रेस चल रही है, और वी विल ओनली टेक ओनली द पीपल हु कंप्लीट दीज मॉड्यूल्स टू द नेक्स्ट थिंग। अगर आप लोग इन स्टेप्स से ग्रेजुएट नहीं करेंगे, ऑनलाइन पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, MCQs नहीं करेंगे, SAQs नहीं करेंगे, वी विल नॉट टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेज। आपका स्कॉलरशिप वुड बी सस्पेंडेड
and cancelled later on अगर आप within the stipulated time ये सारी चीज़ें नहीं करते. So it is really really important कि आप इन सारी चीज़ों को पूरा करें. डॉक्टर अनम ने लिखा है कुछ, प्लीज़ जो भी इस तरह की चीज़ें हैं रीच आउट टू द फैकल्टी, इन्फॉर्म देम, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि यू डू इट इन अ टाइमली मैनर, बिकॉज इफ़ यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी हम टाइम वापस नहीं बाय कर सकते. सो वी अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस हो सकते हैं, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू डू दिस इन टाइम. Next. So the seminars which are going to help you top up your knowledge and skills about the lectures that you shall attend. Next. So seminars का मकसद आपकी skills build करना है, आपको practical insights देना है, और इनकी डिलीवरी हम इसी तरह वीकेंड्स के ऊपर ही रखेंगे. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम लोग इनको अटेंड करेंगे लाइव ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें. इफ़ यू वांट एन एक्सेप्शन, आप हमें पहले से बताएंगे और फिर आप रिकॉर्डेड उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन इट कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड कि आप ये अटेंड नहीं करेंगे एंड यू विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस. नेक्स्ट. So this is a list of seminars. So essentially जो topics lectures में cover हो रहे हैं, we will bring in these experts जो professors हैं हमारे, जिनका बहुत ज़्यादा experience है. वो इनमें से हर topic पे आपके साथ बातचीत करेंगे और आपको practical knowledge, tips, skills देंगे जो कि चाहिए हैं primary health care में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से करने के लिए. Next. जैसे मैंने कहा था कि research is an integral part of the program. Next. और इसके अंदर हम आपके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे होंगे. नेक्स्ट. और ये वो प्रोग्राम है, आप इसको खुद भी जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. जब ये मैंने 2012 में अटेंड किया था, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल काइंड ऑफ अच्छा इंटरनेशनल प्रोग्राम दैट आई अटेंडेड व्हिच आई फेल्ट इज रियली गुड. उससे पहले ही मैंने बहुत सारी रिसर्च की ट्रेनिंग्स की थी, और ये जॉन हॉपकिंस की फैकल्टी पाकिस्तान आई थी और मेरा तब से ख्वाब था कि इसको हम अगर एक यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तौर पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकें. सो this is the program that will inshallah be made available as a certificate program in Pakistan, not with the John Hopkins University. Shifa Tamir Millat University ही इसको आपको endorse करेगी, लेकिन we will provide you with the all knowledge and skills that are used in this program through our platform. इसका एक ब्रीफ वर्जन हम आपके साथ करेंगे, लेकिन हम इसका एक अलग रिसर्च सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे जिसमें इनकी डिटेल स्किल्स, जो आप में से लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे रिसर्च एंड के ऊपर, so we'll help you top up your skills and launch it as a separate program. और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम एक MRes मास्टर्स इन रिसर्च जो है उसका प्रोग्राम लॉन्च करें, बिल्डिंग अपॉन द कोहॉर्ट दैट वी हैव. नेक्स्ट. और इसके ये की स्टेजेस हैं. सो सबसे पहली चीज़ क्या, आपने अपने नीड्स असेसमेंट करनी है क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए से, और उसके बाद आपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं उनको देखना होता है कि आप जिस भी हेल्थ केयर कंडीशन में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल इस दिस केस में हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो वो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, हम उसको अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से कैसे वैलिडेट करेंगे, उसको हम किस तरह अपनी नीड्स इन्फॉर्म करेंगे बेसलाइन या बर्डन डिजीज स्टडी करने के लिए, किस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. इस केस में जो हमारी इंटरवेंशन गाइड है वो WHO की मेंटल हेल्थ गैप इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का UHC बेनिफिट पैकेज है, और हम इसकी प्री पोस्ट असेसमेंट आपके साथ शेड्यूल करेंगे और आपको इन तमाम चीज़ों में ट्रेन करेंगे. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड, हाउ मच यू योरसेल्फ इन्वेस्ट इन. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो और वो सिर्फ इसको एक रिक्वायरमेंट के तौर पर पूरा करें. हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें रियली इंटरेस्टेड हों और इसमें मज़ीद हमारे साथ काम करना चाहें. सो वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू कम्युनिकेट योर इंटरेस्ट, नीड्स, objectives, goals, and we can work with you to make sure that the program actually suits your needs and objectives. Next. So मैं इस पे मज़ीद अब मेरा ख्याल है बात नहीं करता, अभी तक के लिए इतनी ओरिएंटेशन काफ़ी है. नेक्स्ट. ये इसी तरह से हमारे ऑनलाइन सेमिनार्स होंगे. विल आल्सो सी कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद हैं, अगर वो इन पर्सन आना चाहते हैं, मतलब उस तरह से भी देखा जा सकता है, इन सेशंस को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. बट अगेन वी विल वर्क विद यू
to make sure that you all participate in these programs. Next. Clinical rotations, next. So हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लिनिकल रोटेशंस जून से शुरू हो जानी चाहिए ताकि आप अपनी जो पूरी रोटेशंस हैं उनको कंप्लीट कर सकें इन द टाइम. नेक्स्ट. और उस तरह उन्हें अपने केस लॉग्स पूरे कर सकें. सो वी हैव 35 कैंडिडेट्स जिनका लेस देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो ये अपनी क्लिनिकल रोटेशंस पूरी करें जिसमें मेंटल हेल्थ या साइकाइट्री की क्लिनिकल रोटेशन भी शामिल है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट that you pay attention to it, you coordinate with the faculty and you get it done. Next. So जो साइकाइट्री की आपकी रिक्वायरमेंट है वो 4 वीक्स की क्लिनिकल रोटेशन की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपने केस लॉग मेंटेन करने हैं और 35 ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट जिनका अभी क्लिनिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से इट्स इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज यू वोंट मेक इट टू द एलिजिबिलिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम. और आप लोग प्लीज़ रीच आउट करें टू द फैकल्टी सो दैट वी कैन सी कि आपके नज़दीकी फैसिलिटीज़ कौन सी हैं और कहाँ पे आपकी साइकाइट्री की ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज की जा सकती है. नेक्स्ट. दिस इज़ अ डिटेल ऑन के किस तरह के केस लॉग्स आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे एज पार्ट ऑफ योर रोटेशन. We'll talk about it later when we do a dedicated session with you on clinical rotations. So maybe we should do a dedicated session with the 35 participants ताकि हम उनको इसमें अच्छी तरह वॉक थ्रू कर सकें. नेक्स्ट. रिसर्च प्रैक्टिकम फॉर्मली सितंबर से स्टार्ट होगा और फरवरी में कंप्लीट होगा. सो इट विल बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ्स जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो नॉलेज और स्किल्स गेन किए होंगे अंटिल सितंबर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि सितंबर तक आप मेंटल हेल्थ की तमाम चीज़ों को, कोर्सेज को कंप्लीट कर चुके हुए हों, MCQs SCQs कंप्लीट कर चुके हों, आपने सेमिनार सारे अटेंड किए हों सो दैट यू कैन मूव ऑन टू दी प्रैक्टिकम पार्ट including the clinical rotations and research workshops. Next. Next. So इसका मकसद क्या होगा? आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने जो क्लिनिकल नॉलेज हासिल किया है, क्लिनिकल स्किल्स हासिल की हैं, रिसर्च नॉलेज और स्किल्स हासिल की हैं, आप उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, अपनी जो पेशेंट पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स को समझ सकें, उनके बैरियर्स देख सकें, उनको फैसिलिटेट कैसे करना है, रिसर्च की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कर सकें अपनी क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, और आप असेस कर सकें इन अ वेरी एविडेंस बेस्ड मैनर कि आप किस तरह पेशेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एविडेंस इन्फॉर्म्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन पैकेजेस जो WHO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिकमेंड करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय दी जनरल फिजिशियंस. दिस डज नॉट मीन कि आप साइकाइट्रिस्ट बन जाएंगे, बट इट विल एक्चुअली प्रोवाइड यू विद द नॉलेज एंड स्किल्स जो कि मिनिस्ट्री और WHO एक्सपेक्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि एक जनरल फिजिशियन ज़रूर कर सकता है अपनी कम्युनिटी प्रैक्टिस के अंदर. नेक्स्ट. So I think I'll bypass this for now. तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि सितंबर से फरवरी में क्या हो रहा होगा? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीनों में एटलीस्ट आप 90 पेशेंट्स स्क्रीन करेंगे फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज. सो अगर 6 महीने में आप ये देखते हैं कि 90 पेशेंट्स, सो इट इज़ 15 पेशेंट्स पर मंथ, इनको स्क्रीन करना है यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स. और आप ये देखेंगे कि उनके ज़रिए आप उन्हें स्क्रीन करते हैं हु हैज़ द प्रॉब्लम, हु डजंट हैव द प्रॉब्लम. उसके बाद यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड, क्योंकि जिनको आप स्क्रीन करेंगे नॉट एवरी वन ऑफ देम विल बी अ कैंडिडेट फॉर, कुछ लोग स्क्रीन पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग स्क्रीन नेगेटिव होंगे, बिलो द क्लिनिकल थ्रेशोल्ड होंगे. तो आप उनको UHC बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें एटलीस्ट 45 पेशेंट्स को. और उसके बाद आपने एवेल्युएट करना है यूजिंग सूटेबल रिसर्च डिज़ाइंस जिस पे हमारी फैकल्टी, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, एटलीस्ट 30 पेशेंट्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेटेबल इंप्रूवमेंट ला सके उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में. एंड वी एक्सपेक्ट के आउट ऑफ दीज 30, 10% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे और उन्हें रेफरल और सपोर्ट चाहिए होगा. सो हम आपके साथ काम करेंगे टू सी हाउ योर रेफरल पाथवे वर्क्स और वो हम किस तरह से काम कर सकते हैं. तो अगर आप इस स्लाइड की राइट साइड पे देखें तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ्स हमारी क्लासरूम टीचिंग है,
फैमिली मेडिसिन के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। 6 मंथ्स हमारा रिसर्च का प्रैक्टिकम है, जिसके अंदर आप स्क्रीन करेंगे पेशेंट्स को, उनको इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे अगर स्क्रीनिंग में निकलता है कि आपने खुद प्रोवाइड करनी है। अगर आपने सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रेफर करना है। जब आप उनको देख रहे होंगे तो हमारी फैकल्टी के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही होंगी टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड हाउ यू कैन डू इट बेटर। और वी व्हाट वी रियली वांट इज कि हम एक्चुअली टेंजेबल तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकें क्लिनिकल आउटकम्स में, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू एनेबल ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द प्रोग्राम। नेक्स्ट। सो ये रिसर्च प्रैक्टिकम की चीज़ें हैं। व्हेन वी विल हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑन इट तो विल गो थ्रू इन डिटेल, बट आई होप यू हैव अ नाइस ओवरव्यू ऑफ इट नाउ। नेक्स्ट। और इसमें भी हम रिसर्च प्रैक्टिकम की तफसीलात पे तब ज़्यादा बात करेंगे जब हम डेडिकेटेड इस पे बात कर रहे होंगे, बट फॉर यू इट्स अ ओवरव्यू नाउ, ओके, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ओवर द नेक्स्ट 6 months. नेक्स्ट। 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 ये बिल्कुल वही वाली स्लाइड रिएटरेट कर रही है। नेक्स्ट। सो ये बहुत अहम स्लाइड है एंड आई वांट टू स्पेंड अ मिनट ऑन इट। तो हमने पहली स्लाइड देखी थी जहां आप सारे लोग फ्रॉम पाकिस्तान डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं। मैंने जो आपको नंबर्स दिए हैं कि आपने 15 पेशेंट्स इन अ मंथ स्क्रीन करने होंगे ओवर द 6 months पीरियड फ्रॉम सितंबर टू फरवरी। अगर आप में से हर एक इस तरह से पेशेंट्स को स्क्रीन करता है तो आप हमने मिल के 20,000 पेशेंट्स को स्क्रीन कर लिया होगा। और आप में से हर एक अगर 30 लोगों को एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देता है, तो हमने 10,000 मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की आउटकम्स इंप्रूव किए होंगे। और उसमें से 6,700 या तकरीबन 7,000 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका हमारे पास सॉलिड डेटा होगा एविडेंस बेस्ड। और कम अज कम आउट ऑफ दीज 10% पेशेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रेफरल की ज़रूरत होगी, और हमने रेफरल पाथवेज बनाए होंगे और सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी हम मैनेज कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। This is the quantum of change, the bare minimum quantum of change that we want to bring with you. I know कि पाकिस्तान के बहुत चैलेंजिंग हालात हैं अभी, और हर तरफ एक मायूसी है, हर तरफ चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बट दिस इज़ आवर पार्ट टू प्ले। यह आपका पार्ट है टू प्ले। आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि आप पे कोई बर्डन ना बने इनमें से किसी चीज़ का। सो वी हैव मेड दिस टीचिंग वेरी फ्लेक्सिबल। वी हैव टेकन द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ यू. We are trying to provide you with the best faculties, but this is what we expect from you. This is what is due to your patients in your own settings. और इंशाल्लाह once we do this, I know अब मैं ग्लोबल पोजीशन में हूँ यहाँ पर यूके में, लंदन में। इस तरह का कोई मॉडल अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमने ये किया तो ये दुनिया के लिए भी एक बहुत इनोवेटिव इम्पैक्टफुल मॉडल होगा। और दिस इज ऑल द रीजंस कि हम इसको हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस में कन्वर्ट कर सकें। So for those of you who will be interested, inshallah we'll work with you to see कि किस तरह आप लोगों को इस लाइन के ऊपर भी लाया जा सके। एंड डेफिनेटली अभी जब हम ये देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मिनिस्ट्री को पैसों के, मुल्क के लेवल पे बहुत चैलेंज है, इस तरह के मॉडल का बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी इम्पैक्ट भी है। बिकॉज वी हैव द जनरल फिजिशियंस एंड फैमिली फिजिशियंस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. What universities need to do is think out of the box, work with the community which is out there, try to provide them with the knowledge, skills and opportunities which can actually enable a real world change. ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा मकसद है। हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं इस सारे मकसद के लिए। हमें आपकी फुल कोऑपरेशन चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि वी रीच देयर। नेक्स्ट। और मैं इस एग्जिट एग्ज़ाम को उस तरह से थ्रेट नहीं के तौर पे चाहता आप परसीव करें, बल्कि मैं चाहता हूं कि इमेजिन करें कि अगर हमारे पास इतने बड़े नंबर्स हों, हम पहला कोहॉर्ट हों, और हम कहें कि हमने अक्रॉस पाकिस्तान इतने पेशेंट्स की ज़िंदगियों को 6 महीने में बदला है, उनको एविडेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, और हमारे पास रिसर्च का डाटा है जो ये कहता है कि उनके मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स इंप्रूव हुए हैं। असल हमारा वर्ल्ड कप वो होगा। और आई कांट सी अ रीज़न कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। आई होप ये जो नंबर्स और जो एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है,
और अगर आपको लगती है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, आप में से किसी के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, रीच आउट टू अस, talk to us, let us know. We'll see how we make it happen. But I'm really looking forward to working with you until the next year, inshallah, for next years to come, to see how we play our part in making this change in our country towards patient with mental health problems. Next. Can I check Dr. Ali Hashmi ने join कर लिए क्या हमें? Yes, Dr. Usman, Oh, Dr. Ali has joined us. perfect. Welcome, sir. Very pleased to see you. मेरा ख्याल है मैं आपका टाइम नहीं अभी ज़्यादा ज़ाया करूँगा. So maybe I'll pause for the questions and comments and we'll take it after your talk. So over to Dr. Ali. And I hope Dr. Huda will coordinate the slides. So Dr. Ali, you can take it from here. Thank you very much, Usman. Just before we begin, can we have a very quick sound check? Usman, can you hear me okay? Is the sound okay? Yes, Dr. Ali. Loud and clear, thank sir. You. Thank you very much. What a delight it is to be here talking to आप सबसे बात करने हैं. मैंने उस्मान से पहले चेक किया कि कोई अगर नॉन पाकिस्तानी ऑडियंस है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ. I can speak in English. But it's such a delight. First of all, thank you, Usman. It's always wonderful to see former students and mentees reach such distinguished positions. I noticed in the very long participant list, our very dear friend and colleague, Dr. Zafar Mirza is there. Assalamu alaikum, sir. I noticed that Dr. Sama Iqbal of the National Bioethics Committee is there, and a long list of colleagues. So welcome all. I've been given the task of the next 20 to 30 minutes to talk very quickly about mental health gap, what it is, how we can utilize it in the interests of the program that we are running, और किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है. जिस तरह उस्मान ने भी बात की थी कि क्योंकि mental health की need इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, that there is no way that we can ever fulfill our mental health needs only by mental health professionals, and therefore it's important to sort of devolve our mental health delivery down to the primary care level. So I'm very excited to be talking about this particular project. Mera introduction aapke samne hai. I'm not a high-powered researcher like Usman. I'm not a high-powered policy person like Dr. Zafar Mirza. I'm a psychiatrist. I'm an academic. I'm currently chairing the Department of Psychiatry at King Edward, and I also have additional responsibility for one of our large psychiatric hospitals, Punjab Institute of Mental Health. So that's my qualification. Next slide, please. So let's talk very quickly about mental health gap. Why do we call it that? Because this is the gap between the need for mental health services and the availability of mental health services. उसके बीच में जो gap है, उसको हम mental health gap कहते हैं. आप statistics आपके सामने हैं. Increasingly we are aware, we've always known, हम तो खैर क्योंकि psychiatrist हैं, mental health के जो लोग हैं, हम लोग काम करते हैं इसमें. So mental, neurological, substance use, ये जो MNS की जो short version है, ये आगे भी आएगी, so इसको ध्यान में रखिएगा. Mental, neurological and substance abuse conditions, total global burden of disease, not mental health, all illnesses, total global burden of disease में से 13% मेंटल, न्यूरोलॉजिकल या सब्सटेंस, ये इनको हम ग्रुप टुगेदर इसलिए करते हैं बिकॉज इसमें काफी में ओवरलैप होता है. सो मेनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैव न्यूरोलॉजिकल कंकॉमिटेंट्स, substance abuse can cause neurological problems, mental health problems, so on and so forth. But 13% of all global illnesses is a very large number. Or second bullet point, agar aap gaur kare, even still yet, despite our best efforts, globally, even in countries where you have all the resources available, United States, जहाँ पे मैंने अपना first half of मेरा career अमेरिका में जो गुजरा था training, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे individuals हैं who do not receive the care that they need, let alone a country like Pakistan is already resource deficient. So conservative estimates say कि 3/4 से लेके 90% जो individuals हैं उनको वो treatment नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए for mental health conditions. What are the implications of that? इसकी हम आगे चल के बात करेंगे. Why is that important for non-psychiatrists, non-mental health professionals? इसकी बात आगे चल के आएगी. Why should you care? इसकी बात अभी आगे चल के just in a few minutes आएगी.
So ये वो gap है between the conditions which they exist globally and the fact that most people who have these conditions don't get the treatment that they need. Next slide, please. So this is a nice graphic representation of the fact that this is a breakdown of the global health workforce basically. इसमें जो दो particular areas हैं, I would invite your attention to that. Notice that of the global health workforce, only 8% are psychiatrists, only 7% are psychologists. So psychiatrists and psychologists really present sort of the frontline workers in mental health. So if you have a milder condition, you have a psychologist who addresses it. If you have a more severe condition, medication that required, तो वहाँ psychiatrist को से communicate करते हैं. लेकिन जो 1% global health workforce है, जो mental health में काम करती है, उसमें से भी very small amount represents those specialized sort of workers, psychologists and psychiatrists. What are the implications of that? The implications being that we cannot train enough psychologists, we cannot train enough psychiatrists to fulfill the gap, the mental health gap, meaning therefore that we need other healthcare workers to step up, including family practitioners, general practitioners, to fill that gap. Iska ye hai. If you look at the right side of the slide, almost half the population of the world lives in countries where there's only one psychiatrist, one mental health worker, one psychiatrist for about 1 lakh people, and Pakistan is in this count. So the World Health Organization says that you should have one psychiatrist for about every 10 to 15,000 patients population-wise. In Pakistan and in half the world, as you can see from this graphic, that number is hugely different. Psychiatrists milne ko nahi milte. Pakistan ki example le le, we have by generous estimates hamare pure mulk mein roughly about 600 to 700 qualified psychiatrists, roughly. That number keeps changing because we have people who leave to go abroad, and we have other people who qualify and become qualified psychiatrists, but 600 to 700 is about the average number for a population of 225 million or 220 million plus. So ये actually 100,000 people लोगों का जो number है, ये तो हमारे मुल्क में इससे भी ज़्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख, और वो भी उसकी भी बहुत ज़्यादा disparity है. So if in larger cities you have some psychiatrists and psychologists, but even if you move out of the main cities, Lahore, Karachi, Islamabad, Pindi, Multan, you move slightly out of there and there's no mental health resources at all. But of course the need for mental health is there, जिसकी बात हमने पहले भी की, आगे चल के भी करेंगे. Next slide. So ये बात हो रही है कि हम कितनी resources mental health पे spend कर रहे हैं. So in mental health, in lower and middle income countries, we have a very small amount being spent on mental health, and we have disproportionately larger amount being spent in mental health in bigger countries. लेकिन ये जो नीचे breakdown है, ये उस चीज का breakdown है कि वो जो mental health का budget है जो already inadequate है, वो किन activities पे spend हो रहा है. So you can see कि mental health awareness पे spend हो रहा है, maternal mental health पे, school based mental health पे, parental mental health पे. और आप right side पे जो red box है उसमें आप देखें कि बहुत सारी ऐसी countries हैं, बल्कि जो low income countries है उसमें से कोई भी country ऐसी नहीं है जिनकी national suicide prevention strategy हो. So this is a tragedy. Although in Pakistan the good news is कि हमने recently अभी suicide को decriminalize करवा लिया, legislation pass हो गई है. So suicide is technically no longer a crime, does not have to be reported as a crime. However, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो crime नहीं है, और जाहिर है कि अगर हमने अभी उसको decriminalize, इससे पहले suicide was a crime. You couldn't report suicide because you would get arrested. You couldn't report a family member trying to commit suicide. Now it's no longer the case, but of course now we need to begin the efforts to try and do something about the serious problem of suicide. हमारे पास तो कोई strategy नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, in fact low income countries में सभी मुल्कों में कोई strategy है ही नहीं. Usman, may I take a quick call for about 1 minute? I have somebody calling that I need to. Just 1 minute, I'll come right back. I'm so sorry. Sure. In the meantime, please, I request all the candidates जिन्होंने अपनी information नहीं लिखी हुई है chat box में, mentioning your name, your location, your hospital in which you are currently working, and anything that you want to add on, please do write in the chat box.
जो डॉक्टर अली बात कर रहे थे, जस्ट टेकिंग एडवांटेज दैट ही इज नॉट हियर, सो इस स्लाइड में जो सबसे स्ट्राइकिंग बात मुझे लगी वो ये लगी कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज लेस देन $2 पर पर्सन पर ईयर स्पेंड करते हैं, जबकि हाई इनकम कंट्रीज में $50 है। और हमें ये लगता है कि अच्छा, ये हाई इनकम कंट्रीज $50 स्पेंड कर रहे हैं ना, तो ये शायद बहुत अच्छी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे। मैं आपको इधर यूके की एनएचएस का बता सकता हूँ, यहाँ पे जो मीन वेटिंग टाइम है ना एक साइकोथेरेपी का, वो 7 से 8 महीने है। और अमेरिका में ये सारी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए कवर्ड हैं चीज़ें। सो ये नंबर्स भी अगर आप इनको इनके कॉन्टेक्स्ट में समझें तो इससे ये पता चलता है कि इवन इतने पैसे भी खर्च करके आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो चाहिए। एंड दिस इज़ वेयर आवर प्रोग्राम बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नीड्स को यूज़ करते हुए एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जिससे हम अपने पेशेंट्स की ज़िंदगियों में एक तब्दीली ला सकेंगे। और आई हैव नो रीज़न टू काइंड ऑफ बिलीव कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप लोग अपनी सेटिंग्स में हैं, कॉन्टेक्स्ट में, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ स्पेशली उन डॉक्टर्स से जो कि रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं और उन्होंने इस कोर्स को साइन अप किया है। और मैं अभी से बता रहा हूँ कि मैं उनकी फेवर में बहुत बाइस्ड हूँ। सो आई रियली वांट देम टू मेक द डिफरेंस ऑन ग्राउंड, एंड इंशाल्लाह विल वर्क यू टू मेक ऑल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू। ओवर टू डॉक्टर अली सर। जी थैंक यू उस्मान, अपॉलजीज एवरीवन, मैंने अपना फोन अब साइलेंट कर लिया है। सो there's a couple of interesting comments, maybe if we have time we'll come back to that. Can we have the next slide please? Thoda sa in the next few minutes we can talk about mental health gap. I think we are going to go ahead and have a play a video first and then I can continue. Is that how we want to do it, or Yes, sir. I think we can play the please, video. let's do that. Let's do that. Please go ahead. Thank you. Thank you, sir. Everyone can hear the sound, please? Just raise your hand. Depression haunts and hurts 150 million people. Almost 3,000 people commit suicide every day. In low and middle income countries, 75% of people do not get the mental health services they need. To reduce this huge gap, WHO developed Mental Health Gap Action Programme, or mhGAP, in 2008. An epilepsy project in rural China integrated a simple model of epilepsy control into local health systems and achieved excellent results. We trained mainly the doctors working in the county and the township level. So we have to educate them first. And also we have the
public education for the people, let them to know what is epilepsy. 话说白了，就是我有近几年啊，收入有重要的话是上大学的，就是两人奋斗，也就话说回来，这是说打3天睡1天，这不发的起头。这几年吃药吃上相当好，在这个吃药这个基础上，家庭也好一点，也能出个做生意了。 The trial project that started in 6 provinces has now been extended to 15 provinces, and tens of thousands of epilepsy sufferers have been treated. Georgia and Cameroon are now also training primary care physicians on how to diagnose and treat patients with epilepsy. mhGAP, scaling up services for mental, neurological and substance use disorders. Services like the Cape Mental Health Project in Cape Town, South Africa, which offers care for children with intellectual disabilities. We provide training in basic, call it basic physiotherapy, seating, positioning, feeding the children. That can be put in place. Those are skills that can be acquired. This is my daughter Tara. She's intellectually disabled. When I started working with the cerebral palsy children, we just have a bond. Each child responds differently. But if you know how to bond with that child, it's just beautiful. It all comes together and you know exactly what to do exactly at the right time. mhGAP, tackling priority conditions like alcoholism, child mental health disorders, dementia, depression, drug abuse, epilepsy, psychosis, suicide. In India, particularly, following the failure in exams, almost 2,300 students commit suicide. So we have taken this as an issue, and we are very happy to say that the Tamil Nadu government has made a new rule in which a student who has failed in the 12th exam can write the failed subjects within 1 month after the results, so that he doesn't lose a year. Low-cost suicide prevention programs like Snehas are now being initiated in other parts of India, China and Sri Lanka. The Schizophrenia Research Foundation, or SCARF, is also based in Chennai in South India. A WHO collaborating centre, SCARF provides care for a range of chronic mental disorders. I think we eminently fit into this pattern of a low resource setting, working towards delivering mental health care to just about everybody who comes within our fold. We have developed a rehabilitation strategy, which is fairly tailor-made for each person. The focus would be on training of social skills. How do you get into the bus? How do you buy a ticket? How do you go to the bank? How do you draw your money? Or it could be on getting a job. My name is Suresh. I'm working as a manager in a public limited company in the Department of Quality Assurance. My case manager, she maintains my records. I tell her about my problem. She discusses with the doctor and they give me medicine. And I'm normal now. Thanks to my doctors. mhGAP, establishing productive partnerships, reinforcing commitments with existing partners, attracting and energizing new partners. WHO's goal is to see that mental health is integrated into primary healthcare systems across the world. We have the knowledge. Our major challenge now is to translate this into action and to reach those most in need. We need to change policy, practice and political perspectives. Governments across the world need to see this as a health priority. The cost of providing basic care for these priority conditions is as low as $2 per person per year in low-income countries. It's not about the money first, it's about the commitment, the love, the compassion, the will to make a difference. And I think it's the belief that you can make a difference. 1 in 4 people will be affected by a mental, neurological and substance use disorder
at some point in their life. These stories clearly show that with proper care, assistance, and medication, millions can be treated. My desire is that every Indian should be able to go somewhere close to his home and get mental health care. They didn't ask me, they didn't ask to be like this. So they can't say, I need your help, so I'm giving my help to you in the best way that I can. 好的，基本上恢复好的，心理确实就是说是这个也是相当好的。 There is no health without mental health. Indeed, there is no health without mental health. So over to you, Dr. Ali. जी थैंक यू। कितनी अच्छी बात की है जो खातून बैठी हुई थी, उन्होंने कहा माय ड्रीम इज एवरी इंडियन शुड बी एबल टू गेट मेंटल हेल्थ केयर क्लोज टू वेयर दे लिव। नो रीजन कि हम ये प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये ट्राई नहीं कर सकते, ये अहद नहीं कर सकते that every Pakistani should also be able to get quality mental health care within 5 miles or 10 miles or 15 miles of where they live. Especially implement interventions जो low cost भी हैं, जो proven effective हैं, जिसको deliver psychiatrists और psychologists के अलावा भी लोग कर सकते हैं, because as we already saw, psychiatrists and psychologists are in short supply. It's very doable and various different models are being applied in our region also. So India में, Sri Lanka में, Bangladesh में, Maldives में, Bhutan में, हमारी जो SAARC region है, different models utilizing the same mental health gap evidence-based programs are being applied to excellent effect, to very good effect. So थोड़ी सी बात just in the next few minutes कर लेते हैं कि ये mental health gap क्या चीज़ है. I'll just give you a quick overview of that, and then I think I'll let Dr. Usman and his team take over, and they'll sort of walk you through the details. So next slide, please. थोड़ी सी बात हो गई, आपने already सुन लिया है. So mental, neurological, substance abuse conditions, जो mental health gap program की intervention guide है, which we are going to talk about just very quickly, उसमें covered है. Essential care in practice simply means some general principles of how you are going to help these people. And अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये वो conditions हैं जो आपकी mental health gap की जो guide है, उसमें आपको evidence based, manualized, step by step interventions आपको बताई जाएंगी इन सब conditions के लिए. So depression, psychosis, epilepsy, child mental health problem, dementia, ये सारी जो conditions जो list हुई हैं यहाँ पे. And if you have some basic understanding of these conditions and what to offer as a first line or second line intervention, you will be covering 80% or 90% of all mental health conditions that commonly present in clinical practice. So अगर आपको इन चीज़ों के बारे में basic understanding हो, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल आपको 1 साल का 2 साल का 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है. You do need to be trained in mental health gap, you do need to be trained how to deliver it, but it's very user friendly and it walks you step by step through what needs to be done. अगर ये होगा तो ये कर लें, अगर ये होगा तो ये कर लें, अगर ये होगा तो ये कर लें. So it makes it very simple to provide basic care, initial care, starting care for most of these common mental health conditions. और अगर आप ये कर लेंगे, it'll cover pretty much the entire spectrum of mental health conditions जो commonly clinical practice में present होती है. Next slide. ये थोड़ा सा इसको reiterate कर लेते हैं जो हमने already बातें की हैं, because we have 1 or 2 more slides and then I'll wind up. I think इसको repeat करने की जरूरत नहीं है कि mental health disorders जो हैं वो कितने common हैं. I think it's even research भी हमें quote करने की जरूरत नहीं है. Any of us who are practicing in any clinical setting have seen this. ठीक है ना? So if you are in family practice, gynecology, कोई भी किसी भी practice में आप community clinic में, आप teaching hospital में, आप DHQ में, आप private practice में, कहीं पे भी आप बैठे हैं,
you will see mental health disorders show up in various different forms. फर्क ये है कि अगर आपको recognition नहीं है तो आप उसको देख नहीं रहे हैं, but आपने statistics भी आपने देखी नहीं कि mental health कितना बड़ा burden है. Mental और physical health problem जो है वो coexist करते हैं. Just about an hour ago, 2 hours ago, Mayo Hospital में जो मेरा last patient, I work in Mayo Hospital, मैंने देखा elderly woman, 62, 63 years old. She's a mother of one of our university co-workers. She has diabetes, which is uncontrolled. Hemoglobin A1C, अभी मैं 2 घंटे पहले मैं patient देख के आया. Hemoglobin A1C last to see 8 थी. So uncontrolled diabetes, hypertension, and also depression for a number of years. This is very common. People with chronic medical conditions with depression, people with depression and mental health conditions who present as medical problems, acid reflux, aches and pains, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं. आपने ऑलरेडी देख लिया कि जो ट्रीटमेंट गैप है वो कितना बड़ा है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और कितना कम ट्रीटमेंट एक्सेस है. ट्रीटमेंट एक्सेस कम है इसलिए कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास और बहुत सारी चैलेंजेस हैं. इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, ऑफ कोर्स, वी हैव सम यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस, ऑल ऑफ दैट. सो इसका मकसद ये है कि आप मेंटल हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाएं. Let's jump to the last point, जो good health outcomes है. So you know this is a common question that might be asked. Why can't the mental health people take care of mental health problem? ये psychologists, psychiatrists अपना काम खुद करें. ये प्राइमरी केयर को या हमें क्यों तंग कर रहे हैं? हम आपको इसलिए तंग कर रहे हैं कि अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनके आउटकम्स जो है वो अच्छे नहीं होंगे. डायबिटीज का पेशेंट डायबिटीज की दवाई नहीं लेगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट अपनी दवाई नहीं लेगा. Whatever you can think of, there's all kinds of data showing that if you don't address the mental health component of physical illnesses, the outcomes of physical illnesses, the health outcomes are going to be much poorer. आपकी हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, आपके टाइम ज्यादा लगेगा, आपके ह्यूमन रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है ज्यादा होगी. So if you come back to point 6, doesn't take a lot of money or a lot of resources to deliver good effective mental health care. बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए. हमने पहले बात की कि अगर आप कोई भी बजट एलोकेट नहीं करेंगे, दिस इज अ पॉलिसी क्वेश्चन, नॉट नेसेसरली फॉर योर कंजम्पशन, बट you do need to know this. We do need to spend more for mental health care, but we don't need a huge amount of money to improve mental health care outcomes. There are many simple interventions, evidence based, जो cost effectively deliver हो सकती हैं और mental health outcome को बहुत बेहतर कर सकती हैं. Next slide. So I'll stop here. I'll let Usman and his team take over, and I'll stay on for a few more minutes if anybody has any questions or concerns. Thank you, Usman. Thank you so much, sir. Such a pleasure to listen to you. Or while you were talking about your patient, मुझे एक बात याद आई. One of the main reasons जब मैंने सोचा, जब मैं आपके साथ मेयो हॉस्पिटल में काम कर रहा था और वहाँ से मैंने PhD का स्कॉलरशिप लिया लिवरपूल यूनिवर्सिटी का, साइकाइट्री की PhD का, एंड मूव्ड ऑन. आपको पता है वन ऑफ द मेन जो डिसाइडिंग मोमेंट्स थी वो क्या थी? एक पेशेंट थी, बच्ची, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, और वो जो है ना सेल्फ हार्म की अटेम्प्ट के साथ मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में आती थी. और ईआर वालों ने एक दफ़ा उन्हें देखा, असेस किया, भेज दिया सेल्फ हार्म के तौर पे. उसके बाद जब वो दोबारा प्रेजेंट हो गई कुछ दिनों बाद, तो उन्होंने कहा भाई ये साइकाइट्री का केस है, इसको उधर भेज दो. अब जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे देखा, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वाई इज देयर सेल्फ हार्म, टाइप 1 डायबिटीज़ है तो सेल्फ हार्म क्या वजह हो सकती है. और अपॉन हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, सारी चीज़, तो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, शेखुपुरा से आगे किसी सबब एरिया, सब रूरल एरिया से. द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड इंसुलिन फॉर हर. तो वो क्योंकि अब बड़ी हो रही है, उसको समझ आ रही है कि मैं तो निरा मुद्दा हूँ और मैं तो काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकती, तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ. और मैंने सोचा कि अच्छा यार, ये तो मसला नहीं है, हमारे पास मेयो अस्पताल में सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, तो मैं इसका वहाँ से इसको बंदोबस्त करा देता हूँ. तो आई थॉट कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने ये करा दिया उसको. आफ्टर सम डेज शी अगेन प्रेजेंटेड बैक, और मैंने फिर अब उसको थोड़ा और इंक्वायर किया, तो वो कहती कि सर हमारे पास तो फ्रिज नहीं है, तो इंसुलिन तो आ जाती है लेकिन मैं उसे रखूँ किधर. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फ्रिज का भी बंदोबस्त हो सकता है. 10-12 हज़ार रुपए का उस टाइम आता था, आजकल तो शायद और ज़्यादा महंगा हो चुका होगा. एंड आई थॉट कि कहीं ना कहीं से हम बंदोबस्त कर सकते हैं. बट देन शी सेड सर मसला इतना भी सीधा नहीं है. मैंने कहा क्या? कहती हमारे घर में बिजली भी नहीं है, ये इंसुलिन भी हम किसी के घर में रखवाते थे, और मैं अभी भी जो है जब उनसे एक्सेस मिलती थी इंसुलिन लेने की तो मैं ले लेती थी, तो मैं लगा लेती थी. एंड देन आई थॉट कि यार ये मैं मेयो अस्पताल में बैठ के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान हमदानी तो बन जाऊंगा, लेकिन क्या मैं लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाऊंगा?
एंड दिस इज वेयर आई थॉट कि नहीं यार, आई नीड टू मे बी FCPS की ट्रेनिंग को थोड़ा सा होल्ड करके आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंटली. अल्लाह का शुक्र है, मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मेंटोर्स लाइक योरसेल्व्स जिन्होंने इंस्पायर भी किया, गाइड भी किया, सपोर्ट भी किया हर स्टेज पे. अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज भी दी. एंड दिस इज वेयर आई थिंक वी आर कमिंग कंप्लीट सर्कल कि आज हमारे पास ये GPs हैं फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान जो एक्चुअली उन सेटिंग्स में काम कर रहे हैं, और हम इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जहां वी कैन एक्चुअली मेक श्योर कि इन लोगों की नीड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस किया जा सकता है. तो आई थिंक जो इंस्पिरेशन होती है आप जैसे मेंटोर्स के जरिए से, आई थिंक इट गोज अ लॉन्ग वे, और वो Usman, सपोर्ट बहुत since वैल्यूएबल you है. mentioned it just very quickly, thank you for reminding us, thank you for reminding me कि हम हॉस्पिटल में बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं, they are often separated and disconnected from people's real life concerns. अब आपने कितनी अच्छी बात की है कि फ्रिज नहीं है, बिजली नहीं है, all that. So you know those things often get missed. एक last point and then I'll finish, which is कि there's often a prevailing myth कि mental health की जो condition है, especially ज़्यादा severe condition है, schizophrenia है, इस किस्म की चीजें, ये ठीक नहीं होती, ऐसे रिकवरी नहीं होती. ऐसी कोई बात नहीं है. मेंटल हेल्थ की जो कंडीशंस हैं उनसे रिकवरी और पेशेंट्स की जो प्रोडक्टिविटी है फॉलोइंग देयर रिकवरी इज द सेम एज एनी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन. इनफैक्ट मेंटल हेल्थ कंडीशन जो क्रॉनिक नहीं है उसे कंप्लीट रिकवरी, जिसको आम फहम जुबान में क्योर कहते हैं, मोस्ट पॉसिबल है. बहुत बिल्कुल हो सकता है, लोग ठीक हो जाते हैं, दवाइयां भी बंद हो जाती हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन भी हैं, बहुत सारे हमारे पेशेंट जो है क्रॉनिक कंडीशन लेके ही आते हैं, तो जिस तरह डायबिटीज के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के पेशेंट रिकवर हो जाते हैं and are able to become useful members of society, productive members of their families, can have jobs, can get married, can contribute back to their families and all that. Exactly यही बात मेंटल हेल्थ की है. तो कोई भी अगर कहे कि ये मेंटल हेल्थ ट्रीट करने का फायदा नहीं है, ऐसे नहीं, इस पे भी बहुत सारा डेटा मौजूद है. सो डोंट लेट योरसेल्फ बी डिस्करेज. आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस नाउ. Don't let yourself get discouraged by people saying they don't get well, they don't get better. The reason they don't get well is because they don't get the treatment that they need. But we all need to fix that. Thank you, Usman. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. We'll inshallah schedule further sessions with Dr. Ali Hashmi, जहाँ पे ज़्यादा आप clinical इनसे guidance ले सकेंगे. Sir is also available in Mayo Hospital and Punjab Institute of Mental Health. So he's also a valuable resource around जहाँ पे अगर आप लोगों को reach out करना उनसे किसी भी हवाले से. Moving on to the next section. जी, next slide. हमारे पास डॉक्टर जफर मिर्जा भी थे. Unfortunately, he had to go for another meeting, but he is so excited to have you all, and he's very much looking forward to connecting with you all in the next seminars. So, inshallah, we'll see कि ये मुहिम और ये हमारा जो मिशन है, it will only start to get momentum, and we'll get many opportunities, inshallah, coming along. अब आपने जो पिछले 2 सेक्शंस थे प्रेजेंटेशन के, सो पहले सेक्शन में मैंने आपको विजन बताया था, हमारा मिशन बताया था, फिर हमने बताया कि ये किस तरह से कोर्स फिट इन होता है एक बड़े विजन में. डॉक्टर अली ने आपको मेंटल हेल्थ गैप और मेंटल हेल्थ क्यों प्राइमरी केयर में मैनेज करना ज़रूरी है उसके ऊपर आपको बताया. आई विल नाउ टेक नेक्स्ट मे बी 20 मिनट्स जिसमें मैं आपको जो WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई हम तो जनरल फिजिशियंस हैं, तो क्या आर वी गोइंग टू रिप्लेस साइकियाट्रिस्ट, और क्या GPs ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो WHO ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इन सारी चीज़ों को एंडोर्स किया है, और जो भी हम आपको नेक्स्ट चीज़ें बता रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, to be implemented by family physicians in primary care settings. And I will walk you through these next things so that you are much more clearer on कि आप लोग क्या कर सकते हैं. Next. So this is the WHO की mental health gap intervention guide. Screen share करते हैं. Dr. Huda, we can't see the screen now. Sir, 2 minutes, we are sharing it. So what I'm going to do is कि अगले 20 मिनट में मैं आपको WHO की मेंटल हेल्थ गैप इंटरवेंशन गाइड से वॉक थ्रू करूंगा
कि उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इन दी सब्सीक्वेंट सेमिनार्स हम उनमें से हर एक एक कंडीशन से आपको डिटेल्ड वॉक थ्रू कराएंगे कि आपने उसमें से असेस कैसे करना है, डिसाइड कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। एंड दैट विल बी लेड बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स इन द फैकल्टी जो हमारे पास मौजूद है इंशाल्लाह। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो ऑनलाइन पार्ट है प्लीज़ उसको इन टाइम कंप्लीट करें ताकि यू मेक द बेस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़, वरना यू वॉन्ट बी एबल टू कीप पेस विद जो हम आपको नॉलेज और स्किल्स ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर आप, अच्छा, ये जो WHO की मेंटल हेल्थ गैप इंटरवेंशन गाइड है, जैसे आप इसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं, आप इसको सिंपल गूगल में टाइप इन करें, यू कैन डाउनलोड इट, इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल। और इसकी एक ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल, बोथ आर वेरी सिंपल, और आप इनसे बेनिफिट कर सकते हैं इन योर डे टू डे प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट, सो ये जो कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं प्राइमरी केयर में, डिप्रेशन, साइकोसिस, एपिलेप्सी, इसने देखें की कार्डिनल सिम्टम्स बताए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर कोई प्रेजेंट होती है, पेशेंट आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है तो कौन से की सिम्टम्स होंगे जो ही वो प्रेजेंट करे तो आपको फौरन सोचना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहा है। क्या ये डिप्रेशन है, क्या ये साइकोसिस है, एपिलेप्सी है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया है, सब्सटेंस अब्यूज है। नेक्स्ट, सेल्फ हार्म की अटेम्प्ट है। और इसके अलावा ये कुछ इमरजेंसी प्रेजेंटेशंस भी हैं आपके पास। सो विल हैव सेमिनार्स ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल कि क्या इमरजेंसी प्रेजेंटेशन हो तो उनमें से कौन सी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसकी इमरजेंसी प्रेजेंटेशन ऐसे आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट, अब ये डिप्रेशन है। सो आई विल वॉक यू थ्रू डिप्रेशन इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये है, बट दिस इज जस्ट मेंट टू बी एन ओवरव्यू। इसका जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल से आपको डिटेल गो थ्रू करना है, इंशाल्लाह विल हैव अ डेडिकेटेड सेमिनार ऑन इट। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने आपको जूम की कॉल से बाहर निकाल देना है अगर आपने ऑनलाइन वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब ये सेमिनार जिस चीज़ के हो रहे हो आप ऑनलाइन अपना लेक्चर अटेंड करके आए वो वाला, और उसके MCQs और SAQs आपने हुए हुए हो कंप्लीट। सो पहली चीज़ है असेसमेंट का पार्ट। सो पहला सवाल जहन में ये आता है, कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है, क्या इसको डिप्रेशन है, क्या कोई और वजह तो नहीं है इन सिम्टम्स की, और कोई दूसरी जो प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं क्या वो तो को एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप 3 चीज़ें जहन में याद रखें, असेस, डिसाइड, मैनेज, फॉलो अप। 4 चीज़ें हैं इसमें। जब भी पेशेंट आपका असेस करना है मैंने, फिर मैंने डिसाइड करना है कि ये कंडीशन है या नहीं है, मेरे पास मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल क्या है और फॉलो अप क्या है। अब मैनेजमेंट में आप देखें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपके पास साइको सोशल इंटरवेंशंस हैं, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। जब आप साइको सोशल इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो साइको सोशल इंटरवेंशंस है। और आप ये देखेंगे कि दे आर वेरी इजी, एंड आई एम वेरी हम्बल टू शेयर कि हमने जो बहुत सारा काम यहाँ पे किया, सो दे आर अवेलेबल इन उर्दू। मैनुअल्स पूरे के पूरे मैनुअलाइज्ड मौजूद हैं, यू कैन इजीली एक्सेस देम, विल प्रोवाइड यू विद द ट्रेनिंग ऑन दोज इंटरवेंशंस एंड यू कैन प्रोवाइड देम टू द पीपल। और हमने उनके ऊपर बेस्ट रिसर्च करके लांसेट में और जामा में पब्लिश किए हुए पेपर्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो हमारी पॉपुलेशन में काम करते हैं। सो दैट इज़ अ रोल दैट वी फोरसी इंशाल्लाह कि आप लोग एट स्केल कर रहे होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो असेस, डिसाइड, मैनेज एंड फॉलो अप। नेक्स्ट, अब असेसमेंट में क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं इसके। पहला सवाल आता है कि क्या ये इसको डिप्रेशन है या नहीं है, या ये सिम्टम्स हैं 2 वीक के लिए या नहीं है। अगर हैं तो आप आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशंस को देखें। अगर हैं तो क्या इनमें से कोई एडिशनल सिम्टम्स हैं उसमें या नहीं है। अगर हैं तो आप आगे चलेंगे, अगर नहीं तो दूसरी कंडीशंस के लिए देखें। अब जब आपके पास उसको ये सिम्टम्स हैं तो क्या उसकी, क्योंकि मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट का एक बात, एक असूल याद रखें कि एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है। हमारे जहन में बहुत से ख्यालात आते हैं, जैसे हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स जा रहे होते हैं, घर से बाहर होते हैं, बच्चे बाहर होते हैं, पेरेंट्स बाहर होते हैं, हम पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो एक जहन में वहम आता है ना, खैरियत से हों, टाइम पे आ जाएं, थोड़ी देर हो गई है, विच इज़ नॉर्मल, मतलब फॉर द पीपल वी केयर फॉर। लेकिन जब यही चीज़ एब नॉर्मल हो जाए, सो मच सो कि दैट starts to impair your functioning, be it in your personal domain, be it in your family domain। इम्तिहान है, हम सारों को इम्तिहान की वरी होती है, लेकिन अगर वो इम्तिहान की वरी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप खाना पीना भूल जाएं, आपकी नींद उड़ जाए, आप कोई और काम ना कर सकें, दैट इज़ व्हेन इट इज़ नॉट हेल्दी, नॉट हेल्पफुल, एंड दिस इज़ वेयर वी नीड टू इंटरवीन एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। सो जब सिम्टम्स हों
तो बिल्कुल सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ असेस करनी है वो ये कि क्या वो उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट कॉज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर फंक्शनल इम्पेयरमेंट कर रहे हैं तो फिर हम बात करते हैं कि वो डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, अब क्या उस डिप्रेशन के सिम्टम्स की कोई और अलामात हो सकती हैं, जैसा कि कोई फिजिकल कंडीशन जिसकी वजह से वो एक्सेसरबेट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल अनीमिया, मेलन्यूट्रिशन, हाइपोथायराइडिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टीरॉइड्स ले रहा है, अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो जाहिर है आपको फिजिकल कंडीशन को मैनेज करना है, दैट विल टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एज वेल। अगर ऐसा नहीं है और आपने सब एक्सक्लूड कर लिया तो आप आगे चलेंगे, आगे चलें। तो इसका मतलब है कि ये डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। अब उसके साथ जो दूसरी चीज़ एक्सक्लूड करना ज़रूरी है वो ये कि क्या इसकी प्रायर हिस्ट्री ऑफ मेनिया तो नहीं है, इन विच केस ये यूनिपोलर से बाइपोलर डिप्रेशन बन जाता है, यानी ये डिप्रेसिव फेज ऑफ अ बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, अब अगर वो भी नहीं है तो फिर आप देखें कि कोई इस तरह का मेजर लाइफ इवेंट तो नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से ये ब्रेवमेंट में है, विच इज़ नॉट डिप्रेशन बट इट इज़ अ डिप्रेसिव सिम्टम्स, बट इट इज़ नेचुरल टू हैपन दैट आफ्टर अ मेजर लाइफ इवेंट और अ लॉस। अगर वैसा भी नहीं हुआ तो ये डिप्रेशन है। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट देखें कि क्या ये मजीद कोई इस तरह के सिम्टम्स जो सुइसाइडल आइडिएशन या सेल्फ हार्म की तरफ इंडिकेट करते हैं वो तो नहीं है। अगर ऐसे हैं तो जाहिर है ये इमरजेंसी की तरफ बात जा सकती है। अगर हैं तो, अगर नहीं है तो आप इसे डिप्रेशन के तौर पर ट्रीट करेंगे। क्या कोई और प्रायोरिटी कंडीशंस तो कोएग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि बाज़-औक़ात कोमॉर्बिडिटी भी होती है, तो आप उसके लिहाज से भी असेस करेंगे। गो ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये इसका फिर जब आपने असेस कर लिया और तमाम की चीज़ों को रूल आउट कर लिया तो अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। तो प्रोटोकॉल 1 क्या है, डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन का। प्रोटोकॉल 2 क्या है, डिप्रेशन इन बाइपोलर डिसऑर्डर का। अगर वो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशंस हैं। अगर वुमेन हैं हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, देयर स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर देम। अब अगर आप ये देखें कि प्रोटोकॉल 1 फॉर डिप्रेशन, तो पहली चीज़ क्या है, साइको एजुकेशन। ये सबसे अहम बात है। एक मिनट रुक जाएं प्लीज़। सबसे अहम बात है जो वो नीचे 2.1 में हम डिटेल में भी बात करेंगे थोड़ी सी। फिर 2.2 में क्या है, स्ट्रेस को उनके कम करें, स्ट्रेंथन करें सोशल सपोर्ट को। और तीसरी बात, डेली फंक्शनिंग को, डेली एक्टिविटीज़ को, कम्युनिटी लाइफ को प्रमोट करें। चौथी बात पे जाके आता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में सोचना शुरू करें। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा, साइकोथेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर एक्टिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग, इनको प्रोवाइड करें, रेगुलर फॉलोअप प्रोवाइड करें। अब आप इसमें से देखें कि फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन एक है, और माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में कोई भी क्लिनिकल गाइडलाइन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से शुरू नहीं करती। सो देयर इज सो मच दैट यू कैन डू एज अ फिजिशियन टू हेल्प योर पेशेंट। नेक्स्ट। अब ये जो साइको सोशल इंटरवेंशंस हैं, इसमें साइको एजुकेशन के क्या की मैसेजेस हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप उनको कैसे सिखा सकते हैं, फंक्शनिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और ब्रीफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ मोमेंट टू रियली फील प्राउड। हम पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बददिल होते हैं, तो आई रियली वांट अस टू फील प्राउड फॉर दिस मोमेंट। अगर आप ये 2.4 के नीचे देखें, वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस इंटरवेंशन मौजूद है। तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर हुदा कि आप ज़रा हमें स्लाइड पे लेके जाएं और ये दिखाएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि किस तरह हमने पाकिस्तान में इस इंटरवेंशन को बनाया, टेस्ट किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड WHO इन आवर ओन कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स एंड पॉपुलेशन। इसको पब्लिश किया बेस्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में, जामा और लांसेट। जामा इज जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लांसेट दुनिया का सबसे मोतबर हेल्थ रिसर्च का जर्नल है। वी पब्लिश दीज फाइंडिंग्स इन द बेस्ट जर्नल्स। Our interventions made it to the policy. So ये अब interventions WHO की वेबसाइट पे मौजूद हैं, और ये हमारा यहाँ पे काम है जो हमने इसको करके यहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचाया। सो यू कैन सी ये 3 पब्लिकेशंस, पहली पब्लिकेशंस जामा की, दूसरी पब्लिकेशन लांसेट की, तीसरी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ सिस्टम्स की, और ये यहाँ के ही सारे लोग हैं जो की ऑथर्स हैं। स्लाइड 75 पे जाएं। सो ये इंटरवेंशन मैनुअल है। आई नो कि मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं आपसे कहूँगा कि वेबसाइट पे जाके WHO की ये दिखाएं, बट मे बी एट द एंड अगर आपके पास टाइम हो देखिएगा कि अगर आप पार्टिसिपेंट्स को दिखा सकें कि किस तरह ये WHO की वेबसाइट पे मौजूद है उर्दू में, जो कि हमने यहाँ बनाया था, और किस तरह हमारी एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर यू। आई नो कि पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, लोग बहुत अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम, वी डोंट सी अ फ्यूचर रियली देयर, लेकिन इन्हीं तरह के सर्कमस्टांसेस में रहते हुए हमने ये काम खुद वहाँ पे किया था, एंड देयर इज़ नो रीज़न कि हम इससे अच्छा काम अब क्यों नहीं कर सकते। सो गो बैक टू द mhGAP।
सो आई होप के mhGAP के हवाले से आपके क्लैरिटी आ गई होगी कि वी हैव द टूल जिसके अंदर बड़े क्लियर एल्गोरिदम्स हैं कि आपने किस तरह एक पेशेंट को डायग्नोज करना है, असेस करना है, मैनेज करना है और क्या उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट इस पे पेज पे जाएं। अब ये इसकी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, कौन सी एंटी डिप्रेसेंट देनी है, क्या चीज़ें कॉशन के लिए हैं, किस एज ग्रुप में क्या देखना है, जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं ब्रेस्ट फीडिंग है उनके लिए क्या है, ओल्डर एडल्ट्स के लिए क्या करना है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए क्या करना है, कोई और मसाइल हो तो उसके लिए क्या करना है। नेक्स्ट। और ये देखें ये क्लियर दिया हुआ है कि डोजिंग क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, किस पॉपुलेशन में, की साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस या कॉशंस क्या हैं। नेक्स्ट। और फिर इसी तरह फॉलो अप आपने किन चीज़ों के हवाले से करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कब आपने रेफर करना है नेक्स्ट लेवल पे अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। सो आई होप कि दिस ओवरव्यू really helps you with the kind of a thing स्क्रीन डिस्प्ले वेनिश्ड। आई होप कि बाकी पार्टिसिपेंट्स को नज़र आ रहा है या सारों को ही नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो आ रहा है। यस का क्या मतलब है डॉक्टर महविश, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? विजिबल, ग्रेट, ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर साहब काइंडली आप देखें, शायद अपनी सेटिंग्स में आपको कुछ चेंज करना होगा। थैंक यू एवरीवन। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी इस हवाले से कि जिस चीज़ में हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं, सो आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो आपको एक अच्छी साउंड थियोरेटिकल बेसिस देंगे और इसके बाद हम आपको इन सेमिनार्स के थ्रू इन वॉक थ्रू करेंगे इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से, how you can actually provide treatment, what are the key considerations that you must take into account। इसी के साथ वापस चले जाएं डॉक्टर हुदा अपनी मेन स्लाइड्स पे। इसका जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस है ये बेसिकली एक सीबीटी बेस्ड इंटरवेंशन है। और वापस चाहिए, नहीं सॉरी प्लीज पिछली स्लाइड्स पे, हाँ। ये लो इंटेंसिटी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो सीबीटी बेस्ड है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिस्ट्रेस के सिम्टम्स के लिए। इसके ग्रुप फॉर्मेट में भी दे सकते हैं आप, इसे इंडिविजुअल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। और नॉन स्पेशलिस्ट से मुराद ये कि यू नीड नॉट टू बी अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट टू डिलीवर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट। 5 सेशंस हैं, 90 मिनट्स का हर सेशन होता है। ये इसके की कंपोनेंट्स हैं, इसमें साइको एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिहेवियर एक्टिवेशन और रिलैप्स प्रिवेंशन। ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं और एंडोर्स्ड हैं टू द हाईएस्ट लेवल कि ये सारी इफेक्टिव हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट। ये हमारी पाकिस्तान की अपनी पब्लिकेशंस हैं जिसमें हमने इसको यहाँ बनाया, इम्प्लीमेंट किया, एवेल्युएट किया और हमने पब्लिश किया कि ये इस तरह के प्रोग्राम हैं जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं नॉन स्पेशलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग्स में। नेक्स्ट। हम एक तो आपको ट्रेनिंग इसकी देंगे एज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, बट दैट वोंट बी मोर डिटेल्ड और इंटेंस क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं और सारे लोग शायद सारी इस तरह की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। इसको हम एक अलग 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पे यूनिवर्सिटी एंडोस्ड प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च करेंगे। हमने इसको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दिया हुआ है फॉर अप्रूवल। आप में से जो लोग इसको अलग से एज अ साइकोथेरेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेन होना चाहते हैं, यू आर इनवाइटेड टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। आप हमें ईमेल करें, बताएं कि आप इसको एज अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं। विल ऑर्गेनाइज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू ऑल, ताकि जो जो इंटरेस्टेड होंगे, ताकि ओवरव्यू सारों को आ जाए, लेकिन जो लोग इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू काइंड ऑफ रीच आउट टू अस एंड वी विल वर्क विद यू टू how to design the training of this program with you folks. Next. So रिवीजन ऑफ की मैसेजेस क्या है कि मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हमें रिसोर्सेज नहीं इतने चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम खुद मोटिवेटेड हों, अपनी सेटिंग्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने रियलिटीज़ के लिहाज से, एंड वी डू हैव द रिसोर्सेज दैट वी नीड। नेक्स्ट। और आपके कोर्स के हवाले से क्या चीज़ें हैं कि प्लीज़ अपने MCQs और SCQs देखें। अब आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी जब मैंने कहा था, किसी ने कहा भी कि मैं बहुत सख्त हो रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं करके आएंगे तो हम आपको कोर्स से बाहर निकाल देंगे। मकसद ये था कि आपने देखा ये mhGAP जो है, ज़ाहिर है हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, बल्कि ज़्यादा फोकस होगा केस मैनेजमेंट के हवाले से। अगर आपने लेक्चर सुने हुए होंगे उन कंडीशंस के,
आपने उनके MCQs SAQs किए हुए होंगे, तो आप बहुत बेहतर होंगे इस पोजीशन में कि जब आप वो सेमिनार अटेंड कर लें तो उसके बाद आप एक्चुअली अपने पेशेंट्स देख सकें और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अगर आपने बैकग्राउंड वर्क नहीं किया हुआ होगा तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, वी कैन वर्क अराउंड योर अवेलेबिलिटी एंड रूटीन्स, लेकिन अहम बात यह है कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी वंस पार्ट। आपके पार्ट पे आप यू आर पुटिंग योर टाइम, you are interested in doing all of those things. On our part, we are putting in our time, effort, financial resource, सारा का सारा कुछ। अहम बात यह है कि we should be able to make difference in the lives of the people with mental health problem, which is the most important thing. अपने attend करें online seminars because this is where you will get the real crux out of all those things. आपके रिसर्च प्रैक्टिकम और क्लिनिकल रोटेशंस बहुत अहम है आपके नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करने के लिए। अपने केस लॉग्स डेवलप करें, रिफ्लेक्टिव लॉग्स में हमारे साथ डिस्कस करें, अपनी फैकल्टी से डिस्कस करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, और दिस इज़ योर टाइम टू चेंज द वर्ल्ड। आई नो कि मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम होती हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू invest yourself in this program, and inshallah you will see ke in your own sphere you will feel very satisfied कि you are contributing in a meaningful way। जो भी हमारा हिस्सा है, जो हमने इस इमारत में अपनी कौम की तामीर की इमारत में, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो हमने इंटेलेक्चुअल ब्रिक्स ले डाउन करनी है, ये हमारा पार्ट है। तो each one of us should lay down a brick which is our part to do, and inshallah you will see that this will be a very strong इमारत जिसे कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसके बाद कुछ है नेक्स्ट। Acknowledgements, the most important part. I think this was not possible without the support from the Ministry of Health, the WHO, British Asian Trust, the faculty, university, and the Central Institute of Family Medicine, जिसको leadership दे रहे हैं डॉक्टर नासिर शाह साहब, who is a real hero। और ये सारे के सारे फैमिली मेडिसिन में इसको इंटीग्रेट करने में और इसको लीड करने में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, योर इंटरेस्ट। आपके सारे कमेंट्स बहुत हौसला अफजा हैं, और अब हमारे पास टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, you can type them in or you can raise your hand to ask your questions. Our faculty is going to coordinate those question and answers. Next. सर कुछ क्वेश्चन डॉक्टर उस्मान आई रिसीव्ड है, तो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बिल्कुल ठीक है। कुछ जो पीछे हमारा जो मॉड्यूल से रिलेटेड है, कुछ लोगों को रिसीव नहीं हुए हैं, तो उसमें काइंडली एक तो आप लोग अपना इनबॉक्स चेक किया करें जिनको नहीं मिला हुआ मेंटल हेल्थ का मॉड्यूल। अगर उसमें नहीं है तो या तो स्पैम बॉक्स में चेक किया करें या अपने ट्रैश में चेक किया करें, वो लिंक बाज़ दफा उसमें चला जाता है। तो एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहिए, डॉक्टर राबिया फयाज ने ये चीज लिखी थी कि उनको नहीं मिला हुआ। दूसरा थोड़ा टाइमलाइंस का इसमें डॉक्टर जोहा ने मेंशन किया हुआ है कि रिस्पेक्टेड सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर 4 मॉड्यूल्स इन 1 मंथ एंड वी आर गिवन 4 in 1 month, सो हैवंट इवन स्टार्टेड मेंटल हेल्थ येट। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पर मंथ में 1 या 2 मॉड्यूल से हमने स्टार्ट कराया था, तो आई डोंट नो कि 4 फिर क्यों रह गए हैं। हमारे इस मंथ के स्टार्ट में न्यूरोलॉजी का मॉड्यूल आपको मिल गया था, और 15 से आपको जो है वो मेंटल हेल्थ का मॉड्यूल मिल गया है। तो आई थिंक के काफी से पहले फ्लेक्सिबिलिटी हमारी टीम दिखा रही थी, ईद की वजह से भी थोड़ा सा टाइम्स आपके लिए फ्लेक्सिबल कर दिए थे, ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा कर दिया था। तो आई होप कि अब आप इसको टाइमली जो है वो फिनिश करें तो बेहतर है, क्योंकि आगे आपने हमारे सेमिनार का स्केड्यूल देखा है, और जिस तरह हमारी फैकल्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी वो सारे यही चाह रहे हैं कि बैक एंड से जितना भी आपका मॉड्यूल्स हैं उसकी वीडियोस आपने देखी हुई हो, एमसीक्यूज आपने क्लियर किए हुए हों, तो फिर आगे आप जो है वो उसमें बढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और मेंटल हेल्थ का जो है उसमें हमारी यही आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज और एसएक्यूज दोनों ही सबमिट कराए हुए हों, तो दैट वुड हेल्प यू एंड अस एज वेल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। डॉक्टर अनम अशरफ ने क्वेश्चन किया है कि वुड वी बी एबल टू गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेमिनार। तो जी बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो गूगल क्लासरूम पे हम अपलोड उसको कर देंगे। सो
Assalamu alaikum, sir. Highly inspiring and motivating work in a private clinic known for children. अच्छा, ये डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक बशीर ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम sir, highly inspiring and motivating. I work in a private clinic known for children and gynae-obs patients, where patients from diverse communities come. Some patients are delinquent and attendants depressed. Can I place an advertisement board that patients with impaired mental health can report in this clinic? आई थिंक अभी तो आप लोग खुद इस प्रोसेस से गुजरेंगे. आई वोंट सजेस्ट कि अभी आप ये करें. वंस यू हैव डेवलप्ड द नॉलेज एंड स्किल्स और आपने की कंडीशंस को देख लिया हुआ है, इट मे बी दैट वुड बी अ गुड टाइम कि आप उस टाइम इसको एडवर्टाइज करें. Right, Dr. Usman. Dr. Saima पूछ रही है कि wanted to know the format of the paper which we have pledged to give at the end of the course, or it wasn't communicated early. Dr. Saima, don't worry about SAQs, but now we are communicating that it's better if you all solve the SAQs and send us to on time. So they wanted to know something about the paper format, Dr. Usman. पेपर तो आपका डॉक्टर साइमा या डॉक्टर नासिर आपको उसके मुतालिक बेहतर बता सकेंगे कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, बट इट इज़ वेरी फार अवे. इंशाल्लाह इन वन ऑफ द नेक्स्ट सेशंस हम जिस तरह अभी आपको ओरिएंट किया है, तो वी विल मेक श्योर कि जो जो चीज़ भी ड्यू होती जाएगी, तो वी विल लेट यू नो अबाउट द फॉर्मेट दैट विल कम इन. सो डोंट वरी अबाउट इट. इंशाल्लाह यू विल बी अवेयर ऑफ इट वेल अहेड ऑफ टाइम. I hope the answer is clear. और आपके पास हमारा एक फ़ोन नंबर भी है और आपके पास ईमेल एड्रेस भी है, तो यू प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट ओवर फ़ोन और ओवर ईमेल विद एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव. डॉक्टर जोहा, आपने क्वेश्चन किया रिफ्लेक्टिव लॉग्स और केस लॉग के बारे में, तो वी आर गोइंग टू शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो. उसमें सारे डिटेल क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उसको फिल आउट करेंगे और वो हमारे साथ फीडबैक उसका शेयर होता रहेगा. आई थिंक द की थिंग फॉर नाउ इज़ कि प्लीज़ जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और जो आपके MCQs और SAQs हैं, प्लीज़ उनके ऊपर अटेंशन दें और उनको साथ साथ करें और ये सेमिनार्स अटेंड करें. जस्ट कीप वर्किंग अलॉन्ग विद अस और वी विल कीप यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग वेल अहेड ऑफ टाइम. आपकी अगर जैसे क्लिनिकल रोटेशंस जिन लोगों की रहती हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस सो दैट वी कैन वर्क विद यू टू मेक श्योर दैट यू गेट द क्लिनिकल अटैचमेंट्स इन टाइम. और जिस तरह हम इस में आगे चलते जाएंगे, सो यू विल गेट ऑल सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम अस. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अभी के लिए just do the online lectures and do the MCQs. Dr. Zoha is asking, can you please tell till when we should be able to complete this mental health module by the end of September? जिस तरह ये सेमिनार शेड्यूल हो रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन सेमिनार से पहले उनके रेलिवेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो कर सकें. फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट जो सेमिनार होगा वो डिप्रेशन के मुतालिक होगा, तो मेक श्योर कि ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द डिप्रेशन सेक्शन ऑन द ऑनलाइन कोर्स ILMS. आई सी के डॉक्टर नासिर शाह की तरफ से एक आया. सो डॉक्टर नासिर, इज ही अवेलेबल ऑनलाइन टू मीट पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज रिमार्क्स? इश्तियाक साहब चेक करें अगर डॉक्टर नासिर साहब हैं. नहीं मैं पूछ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आई थॉट ये अच्छा होगा कि आपके भी इनपुट्स आ सकें साथ साथ. जी जी जी. मैं पूरा सेशन सुनता रहा माशाल्लाह. थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर हुदा, पूरी टीम, डॉक्टर अली को भी सुना बहुत दिनों बाद. और माशाल्लाह पूरा सेशन अच्छा था, तफसील से बताया. जब हम कहते थोड़ा सा ज्यादा ही तफसील थी उसमें, लेकिन एटलीस्ट इट एक्सप्लेन द पर्पस. लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट ओनली एन एजुकेशन, दिस इज अ बिग नेशनल सर्विस, दिस इज अ बिग रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड ये सिर्फ आज का नहीं है, ये मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है फॉर सर्विस डिलीवरी, स्पेशली मेंटल हेल्थ. बस मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ. इन वाइस चांसलर्स ऑफिस UHS में एक दिन वाइस चांसलर ने बुलाया और दूर से ही कहा, नासिर, ठीक है, व्हाट इज द बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड इन प्रैक्टिस. और लोग बैठे हुए थे, उनकी कोई बहस छिड़ रही थी. मैंने वैसे ही कहा, सर आई थिंक 50% ऑफ ऑल क्लिनिकल केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ. कहते सी ये पता है, बिकॉज दिस इज अनरिकॉग्नाइज्ड.
जो डॉक्टर उस्मान ने कहा कि वी शुड लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू हेल्प, तो मेरा भी मैसेज यही है कि इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन। ये अगले सेशंस की राह हमवार करेगा। अहमियत का अंदाजा अगर आपको हो गया है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट कोर्स, इट्स मच बियॉन्ड दैट। एजुकेशन, सर्विस, रिसर्च, फ्यूचर फाउंडेशन और सिमिलर कोर्सेज के लिए होगा। तो मकसद आज के सेशन का पूरा होगा। प्लस आई एम हैप्पी दैट पार्टिसिपेंट्स भी अच्छी तादाद में आए और हमारे इतने सालों के तजर्बे के मुनासबत से दिस इज अ गुड अटेंडेंस एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने टाइम निकाला, ऑल द स्पीकर्स उन्होंने टाइम निकाला, इसको ऑर्गेनाइज किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। माय प्रेयर्स आर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नासिर। आई थिंक कि आप वो हमारा गाइडिंग स्टार हैं। जिस तरह नॉर्थ स्टार होता था ना पुराने ज़माने में, लोग उसको देख के सफ़र करते थे। तो फैमिली मेडिसिन का यू आर द गाइडिंग स्टार और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस वेरी क्लोज पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप विद यू। आप हमें गाइड भी कर रहे हैं, आप हमें इंस्पायर भी करते हैं और आई थिंक कि पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने कहा कि this is really important कि we all work together to make the difference, make our contribution। और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी आई सी के पार्टिसिपेंट्स की क्वेश्चंस जो हैं वो भी इम्तिहान मोड के ऊपर हैं कि लेक्चर कब सुनना है, जवाब कब देने हैं। एंड आई एग्री विद द कमेंट दैट हैज़ बीन मेड कि सेमिनार्स के साथ इसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि व्हेन पीपल कम टू दीज सेमिनार्स दे आर रियली प्रिपेयर्ड बिकॉज वी एक्सपेक्ट यू टू बी मोर हैंड्स ऑन। और मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू आर ऑल वेल प्लेस्ड विद द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एबल टू डील विद देम। सो माय रिक्वेस्ट इज़ कि जैसे अभी था कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक असेस नहीं किया, साइन अप नहीं किया, उनको कुछ चैलेंजेस भी हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको इन टाइम एड्रेस किया जाए, आप लोग इन सारी चीज़ों को असेस कर सकें और हमसे राब्ते में रहें। आपके पास ईमेल एड्रेस है, आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, LMS के अंदर आपके पास चैट का फंक्शन मौजूद है। प्लीज़ पुट इन योर क्वेरीज देयर। यू हैव ऑल दीज कम्युनिकेशन चैनल्स टू रीच आउट टू अस एंड वी विल ऑलवेज बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओवर टू डॉक्टर हुदा। Thank you, Dr. Usman. There are multiple questions regarding SAQs, तो I would like to clear this again कि जो mental health का मॉड्यूल है उसके SAQs आप लाजमी फिल आउट करके सेंड करें। ये हमारे लिए भी आसान होगा ये समझने में कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है और उस जो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़रा नहीं है उसको प्रॉपर तौर पे हम आपके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आई थिंक कि ये SAQs वाला जो इशू है आई एम एबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। Dr. Mohammad Waheed ने कहा है कि since modules have been shared, can access be granted to upload data regarding patient before September? That way it will be easier to complete the patient screening and a management target. आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अभी तक क्योंकि हमने अपने मॉड्यूल ट्रीटमेंट के लिहाज से पूरे नहीं किए, सो मे बी जब हम डिप्रेशन फॉर एग्जांपल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना डिप्रेशन के पेशेंट्स को असेस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आई वुडंट फील कंफर्टेबल कि बिफोर वी हैव डन द नॉलेज एंड स्किल्स पार्ट आप उससे पहले पेशेंट्स असेस करना शुरू करें। I hope, Dr. Mohammad Waheed, this answer your question. Dr. Kiran is asking that what if we are unable to find 15 patients per month? Is it extremely necessary to get 15 patients per month? So I think it depend भी करता है कि if you are able to achieve your target, तो ये that would be easy to get a required number in 6 months. That is the 90 patients that we require. Sometimes वो 10 भी हो सकता है next month आपको 15 से ज़्यादा 20 patient मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने जो है वो पर मंथ मिल सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतने तो मिल ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राबिया फयाज का। आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द डेटा ऑफ पेशेंट इन कॉन्फिडेंशियल, देन हाउ कैन आई सबमिट लॉग बुक? तो आई थिंक कि हमें उसमें पेशेंट का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम उसको मतलब वैसे ही उसका लिख सकते हैं कि पेशेंट की एज ये और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ये है। So, Dr. Usman, if you can, is it necessary to write the name of the patient as well? If एनोनिमाइज्ड आप डाटा ले सकते हैं पेशेंट्स का फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आइडियली जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी वो ये कि आप अपनी कंसेंट ले सकें इदारे से कि यू विल बी यूजिंग दिस एनोनिमाइज्ड डाटा फॉर योर ओन एजुकेशनल पर्पस। बट आई विल एडवाइस कि आपके जो भी इस तरह के यूनिक सिनेरियोज हैं वी माइट नॉट बी एबल टू एड्रेस ऑल ऑफ देम वन टू वन। प्लीज राइट टू अस, टॉक टू अस, वी विल इंशाल्लाह वर्क विद यू टू मेक श्योर कि वी केटर फॉर योर नीड्स।
Similarly, there is a question from Saudi Arabia. So please reach out to us and talk to us and we can discuss with you. Right. Dr. Simon ne hand raise kiya. Dr. Simon, do you want to talk about something? Gee, sir, I just wanted to ask that would it be a cohort sort of study that do we have to make a follow with the patients, and for how long do we need to keep the follow-up thing? Thank you. As I described earlier on, कि जब हम research के अपने, so there is one part which is the knowledge and skills about mental health. The other part is about the research skills. So when we'll come to that part, I think we will work with you. हो सकता है किसी के कोई बहुत ज़्यादा motivated हो, वो ये काम करना चाहता हो, so cohort को वो longitudinally आगे लेके चलना चाहता हो, we'll try and help you with that. अगर कोई मतलब किसी इस तरह के circumstances में है जहाँ वो कोहॉर्ट के तौर पे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनली फॉलो नहीं कर सकता, तो बेयर मिनिमम है इसके प्री पोस्ट ज़रूर कर सकें कि जब स्क्रीन किया, असेस किया, तब क्या मेंटल हेल्थ कंडीशंस थी, जब हमने 6 वीक्स या 8 वीक्स का ट्रीटमेंट अपना प्रोटोकॉल पूरा कर लिया और पोस्ट असेस किया तो क्या कंडीशन थी. सो इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर ओन इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिस की सेटिंग्स, पेशेंट की एक्सेस, डाटा की प्रोविजन, वो सारी की सारी चीज़ें. एंड बिलीव मी, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दिस पार्टनरशिप विद यू ऑल. दिस कोर्स इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट. तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड कि आप में से जो अच्छे मोटिवेटेड लोग होंगे, मजीद काम करना चाहेंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह. Thank you. Dr. Huda, we also have Dr. Saima, who is the head of family medicine at STMU and is a key person behind this course. So जब हमारे question and answers पूरे हो जाएं, तो please do invite Dr. Saima for the closing remarks. Right, Dr. Usman, sure, please. एक another question Dr. Sadia Khalid पूछ रही है कि I'm working with Sehat Kahani, which is a tele-health setup, but we have our clients in remote areas and we are consulting people online. What will be included in practice? Will that be included in practice कि अगर आप online data ले रहे हो patients का? Again, I think best would be to reach out to us and let us understand your circumstances and see how best you can do this in your current role. This is doable, but we'll work out with you to see how best you can do it in your own circumstances. It is also important because various organizations also have different policies about how you can use their data. So it's important to discuss it and be very clear from the outset. Right, Dr. Usman. Same goes, same answer, I think, for Dr. Asif's also, who is working in Saudi Arabia, that if there is any problem regarding the submission of logbook, you can contact us and we'll let you know how to further proceed in that. There is one anonymous participant जिन्होंने कहा है कि depression पे module नहीं है, तो we'll have a seminar on depression as well. तो उसमें डिटेल जो है वो आपके साथ जो है अभी भी डॉक्टर उस्मान ने जो सारा शेयर किया डिप्रेशन पे कि उसको कैसे असेस करना है, उसको कैसे हमने जो है वो करना है, वो उसमें है, लेकिन वील हैव अ सेपरेट सेमिनार ऑन डिप्रेशन एज वेल. राइट. और सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस यही है कि लॉग बुक कैसे मेंटेन करनी है, उसको सबमिट कैसे कराना है, तो विल लेट यू नो ऑल. तो वो हम आपको बताते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कि हमने इसको किस तरह करना है. There is also a question about screening. तो screening सारे patients की होती है, सिर्फ positive patients की नहीं screen होता. So you will screen 90 patients, of which some of them will be who will screen positive, and you will follow them through the treatment protocol. There were some comments about the mhGAP के उसका Android version नहीं है, तो I'm sorry, this is all I can say. आप maybe उसका जो online computer वाला version है उसको देख सकते हैं और उसका Apple वाला version है जो कि चल रहा है, because that is a WHO resource, but you can also download the mhGAP intervention guide. आप उसको देख सकते हैं. Dr. Kiran, I suppose this was your question. It is a bit difficult to manage the modules due to hard work. Is there a way to cover the leftover modules in the end, except for mental health? We'll try to cover it as soon as possible due to seminar schedules. बिल्कुल Dr. Kiran, Dr. Nasir ने भी इस चीज को बताया है कि एंड में थोड़ा सा उन्होंने टाइम पीरियड रखा हुआ होता है कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन वो स्पेशल केसेस में होता है, सबके लिए नहीं होता. जिसकी कोई बहुत प्रॉब्लम होगी उसको फिर ये टाइम दिया जाएगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर कैंडिडेट ये सोच ले कि हमें एंड पे कुछ टाइम मिल जाएगा तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे. तो स्पेशल केसेस को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी वो इन्फॉर्म करें कि इस वजह से हमारा ये भी कंप्लीट या स्किप हुआ है, तो हम इसको बाद में जो है वो करेंगे.
So I guess there are no more questions. I would now request Dr. Saima Parvez to please share your thoughts about today's seminar. Ji, Assalamu alaikum, Huda. Am I audible? Loud and clear. Ji, आवाज आ रही है, Huda? Ji, Dr. Saima, I can hear you. All right. So I just wanted to congratulate all of you. I've attended the session. It's been wonderful. And yes, Dr. Usman ने बार-बार हमें याद दिलाया है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं. And believe me, all of us are probably going through some phase of anxiety and depression. So वही बात है कि we have to address our own mental health issues as well as those of our patients, because doctors are healers and we need to heal ourselves first. So do apply the principles that you will learn from this course on yourself. And once you do it, you will also apply it on your patients. And hopefully, we will get out of this mental health crisis. So it's been a wonderful session, and I wish the best of luck to all of you. Thank you. Thank you so much, Dr. Saima. Dr. Usman, would you like to add something? I just would like to say thank you everyone for your time and for your interest. This is just the start of our journey together, inshallah, which will be a very long-term journey. If you are interested in mental health in your own kind of clinical practice in primary care, please stay in touch with us, express your interest, reach out to us. We will work with you to make sure कि आपको opportunities मिले, resources मिले, जिसके ज़रिए आप you can contribute to the improved mental health of people in your own communities. This is how we can create change. This is how we can play our part in this situation. Last जो मैं आपसे request करूँगा वो ये कि अभी आपसे link share हुआ है feedback के लिए. This is really important. It will just take maybe 2 minutes of your time. Do provide your valuable feedback because this is how we will inform our next seminars. कि आपके लिए क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, किस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं. So this is really important and a request from me and the faculty to you all. So please complete this jot form जो आपके पास अभी link share हुआ है messages के अंदर. Do complete that and inshallah I look forward to staying in touch with you all. और जो भी आपकी queries होंगी, we'll always be there to help you with them. Thank you so much. आप में से जिन लोगों ने interest express किया है for the CBT based psychotherapy के course का, I hope the faculty has taken note of it. Please do reach out to us through email if you don't hear back from us या message के ऊपर ज़रूर reach out करें. Thank you, Dr. Huda, Dr. Zille, Dr. Ali, who is left now, and everyone, Dr. Saima, Dr. Nasir and his support team. And सबसे अहम आप लोग जिन्होंने इस कोर्स में enroll किया है, inshallah we are very much looking forward to working with you all. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much, Dr. Usman. Ladies and gentlemen, अभी हम इसको ख़त्म करने लगे हैं, लेकिन I request जैसे डॉक्टर उस्मान ने भी कहा है कि फीडबैक जो फॉर्म है उसको आप फिल आउट करें और फिर एक थम्स अप दे दें कि भी आपने इसको कर दिया है. और as we come to the end of this insightful and engaging seminar, I stand before you with a deep sense of appreciation and gratitude. I would like to express my sincere thanks to all our exceptional faculty who has generously shared their knowledge and expertise. Once again, I extend my deepest appreciation to all of you for your active participation, insightful contributions, and unwavering dedication. Together, we have made the seminar a resounding success, alhamdulillah. So let us stay connected, united by a shared commitment to excellence and making a positive difference. Thank you and farewell until we meet again. So please kindly fill out the feedback form, give a thumbs up, and